आपण लेजिस्लेटिव्ह माझं नाव म्हणतो इंडिया नाही बघितलं आपण आणि बघितलं होतं आपण. Did we talk about Article 72? Power to grant pardon, right? नेक्स्ट लेक्चर बद्दल तुम्हाला काही मिळाली नोटिफिकेशन किंवा सगळे मेसेज? आताच लेक्चर घेऊन आपण होपफुली 2 तास अगदी काही अडचण त्याच्यामुळे आणि तिथं सध्या सांगतो सेकंड लेक्चर द्या ना. आता सेकंड लेक्चर होणार नाही पण कसं नाही अवेलेबल नाही म्हणजे इज नॉट वेल. आता तुमचं पहिलं आता लेक्चर झालंच नसतं. आता काय ती देर वॉजंट एनी ॲडजस्टमेंट, नोबडी वॉज अवेलेबल. सो आपण 5 पर्यंत मला वाटतं की आपण कंटिन्यू करू शकतो. जर मला कंटिन्यू करता आलं आपल्याला जिथे थांबावं लागेल तिथे थांबवत आजच्या दिवस आपण. ठीक आहे नाही आता नाही थांबायचं. पण इथं पण थांबवतो आपण हार्डली 5 एवढं झालं. हार्डली 5 पुढे काम करायचं बरोबर. चर्चा तुमची झाली असेल तर आपण 5 मिनिट बराच वेळ आहे मला डिस्कस करायला. आता लक्षात आहे. So we did talk about 72, right? Pardoning parts of the precedent. So just keep in mind that मी बहुतेक तुम्हाला मागच्या लेक्चरमध्ये पण बोललो. We write from the first lecture on executive. We are saying that executives in India, particularly at center, have been underrated always, right from Nehru till date. And the executive head at the state, at state level, has been overhyped or overrated again right from the beginning. And that has been trained in India. This is how we have made our constitution work, right? And this is how we understand these two institutions: institution of president and institution of governor. Right? Recently, Tamil Nadu governor has added one more chapter in or issue in our discussion. That will, in due course of time, we will come to that point. And I think you might have gone through the newspaper also pertaining to that particular incident, right? What do you think? Like, do you think that it is governor's discretion to either give the advice or not to give the advice, or maybe not advice, sorry, address, or can he, instead of reading complete address, can he jump onto few things and then speak few things? मतलब उसने करना ही है, जितना लिख के दिया वो बोलना ही मतलब. अरे ऐसे कोई कंपल्सन थोड़ी होता है. Discretion है ना गवर्नर का. What if he is not willing to give the address? Is it under his discretion? 174, 175 होना चाहिए. Exactly बता पाऊंगा अभी. लेकिन मुझे लग रहा है 175, 176 रहेगा. Okay, 176. हाँ, तो what is the difference? Project and policies of government. Okay. Policies of government, and that particular paragraph has to be written by the legislature, and then obviously I will submit the policy, and then they transfer it to the government. Okay. So it is only their responsibility for not Governor's responsibility. Okay. Executive's responsibility to present the address in the house. So governor walks away from the same. What in that case? So the question is whether it is power of governor to, like, can governor exercise their discretion? You must have come across both the aspects, right? In newspaper, some of the scholars have supported the action of the governor on the under his discretion, and the others have opposed it on the point of convention. Newspapers. आणि न्यूजपेपर मध्ये आर्टिकल आले ना, वाचले का तुम्ही? वाचता ना न्यूजपेपर? मी परत एकदा म्हणजे आपण असं समजा की आपलं पहिलंच लेक्चर आहे आज. कोर्सचंच पहिलं लेक्चर आहे जून मधलं किंवा जुलैमध्ये. न्यूजपेपर वाचणं हे आपल्यासाठी बंधनकारक आहे. आपल्या डिस्क्रिप्शनवरती बाब चालणार नाही. तो प्लीज सी टू इट दैट यू रीड न्यूज़पेपर रेगुलरली. 4 घंटा अगर आप फिर भी पढ़ो, प्लीज पढ़ो. अच्छा हाँ, तो क्या न्यूज़पेपर में मुझे लग रहा है कि दोनों साइड से बात की जा रही है. आपने कुछ पॉइंट्स देख रहे हैं. Whether it is under governor's discretion, the convention has been very well established. Of course, whether that convention has the power to command governor's action or not is also can also be a question. But as of now, that convention is very significant from the point of view of maintaining democracy. Right? The executives are held accountable through these addresses, by people and their representatives sitting in the house. They held the executives accountable for their actions. So even if the address, as she has rightly pointed out, the paragraphs and the content of the address is to be written by the executive heads, that is your council of ministers.
ऐसे ऐसे बोलते हैं, constitutional head of the state, and then governor or concerned person would read that address, right? Whether he should read as it is and should not skip a paragraph, for that I have a very different view. I don't think that matters whether he reads each and every line or he doesn't, practically speaking, because ultimately that address would be kept in the house for discussion. And while it has been discussed in the house, house has full power to go through each and every paragraph written and each and every material that is there in the address and can question the executives on the material that is there in the address. That is what is in center, or at center it is called as motion of thanks. And under motion of thanks, presidential address is kept in the parliament for discussion. And this gives an opportunity to opposition to question the government for its previous year's performance, last year's performance, basically. And what government is going to target for next year. So whatever government is targeting for next year or ensuing year, that is brought to the light, or you can say that is brought to the public domain through this address. So address that way is really very significant aspect of democracy, of parliamentary democracy. बहुत important चीज है वो. अब ये बात कि governor can be walk away from address and I will not read the address, I don't think is you may read constitution that way and you may say that no, it is legally incorrect नहीं लग रहा है, मतलब constitution में तो उसके discretion में आता है शायद. हर डिस्क्रिप्शन कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्टेक्स्ट में आपको पढ़ना पड़ेगा. ऐसे नहीं हो सकता कि लाइक यू कैन नॉट रीड डिस्क्रिप्शन और एनी लॉ और एनी एक्ट out of the context. Like even if it is convention, that convention must make sense in democracy. The context is democracy. If that particular convention has some relevance for the democratic function of the house or maybe democracy, then in that case, government cannot walk away, cannot take defense under idea of discretionary laws. Right? That is what I think. So far as whether it is under governor's discretion to do so, yes, it is under governor's discretion to do. Right? But how exactly would governor use his or her discretion is an important question, and not whether it is under his discretion or not under his discretion. Governor के discretion के लिए अगर आप 163 पढ़ोगे, so it says that governor's discretion would be decided by himself under this constitution. Wherever governor needs to act in his discretion is to be decided by governor under his discretion. है ना? हमने शायद इससे पहले बात की थी इसके ऊपर. तो गवर्नर तो डिसाइड कर ही लेंगे. मतलब मुझे नहीं लगता कि डिस्क्रिप्शन में है कि नहीं, ये क्वेश्चन ही नहीं है यहाँ. क्वेश्चन ये है कि गवर्नर के डिस्क्रिप्शन में है भी तो क्या ये पर्टिकुलर एक्शन ऑफ द गवर्नर, है ना, हम लोग डेमोक्रेटिक नॉर्म्स पे अगर टेस्ट करें तो सही है कि गलत है, ये क्वेश्चन होना चाहिए, ना कि गवर्नर के अंदर है कि नहीं. बात समझ? हाँ. Yes. Assembly hall. Right. No, actually, Samshad Singh is not the only, I think, case law that always needs to be reproduced. Because Samshad Singh has relegated precedent to the level of stamp. समझते हो स्टैम्प? बाकी कुछ काम ही नहीं रखा समशेर सिंह ने प्रेसिडेंट. तो मुझे लगता है कि ये बात सही है कि अभी के लिए हमारे पास समशेर सिंह के सिवाय दूसरा कोई प्रोमिनेंट केस लॉ मतलब है कुछ हम लोग देखेंगे. अभी समशेर सिंह भी देखेंगे. केस लॉ उस तरह से नहीं. लेकिन देखो, जो प्रेसिडेंट के बारे में वो जरूरी नहीं है कि गवर्नर के बारे में भी हमेशा. और ये जो गवर्नर के बारे में वो जरूरी नहीं प्रेसिडेंट के बारे में भी. अब जो अथॉरिटी से हम लोग गवर्नर के बारे में बोलेंगे, क्या हम लोग उस अथॉरिटी से, कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी से, क्या हम लोग प्रेसिडेंट के डिस्क्रिप्शन की बात कर सकते हैं? ये इशू क्यों हुआ? ये इशू इसलिए हुआ कि गवर्नर्स अभी हम लोग देख रहे हैं कुछ स्पेसिफिक स्टेट की, वो क्लेम कर रहे हैं कि वी हैव डिस्क्रिप्शन अंडर कॉन्स्टिट्यूशन टू एक्ट, राइट? एंड maybe there is a support to such actions of the government. Maharashtra, we have example of Kerala, and now Tamil Nadu, right? And Tamil Nadu का governor इससे पहले भी इशू किया था उन्होंने, मतलब इससे पहले कि अगर आपको बात मालूम है. तो क्वेश्चन ये है कि क्या गवर्नर इस तरह से काम कर सकते हैं? क्या उनके डिस्क्रिप्शन में अपनी चीजें डिसाइड कर सकते हैं? तो हाँ, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं. क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है? As and when and where this constitution requires governor to act in his discretion, he shall. अब इसके ऊपर ना प्रैक्टिकली देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट आचार्य है या फिर सुप्रीम कोर्ट है या फिर और कोई स्कॉलर है, इनकी ऑथोरिटी नहीं है सुप्रीम कोर्ट की भी बोलो है. क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन खुद बोलता है कि गवर्नर डिसाइड करेंगे जब जरूरत पड़ेगी, जिस तरह से इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जब उनको डिसाइड करना है वो करेंगे. अब क्वेश्चन क्या रेज किया जा सकता है? क्योंकि देखो, इट इज ट्रू दैट गवर्नर और प्रेसिडेंट मस्ट लिसन टू, मस्ट फॉलो द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ प्रेसिडेंट, है ना. अभी फिलहाल के लिए मान लेते हैं ऐसी यही सच्चाई है, ठीक है. वही समझते हैं जजमेंट एक्चुअली देखा जाए कि आपको फॉलो करना है. चलो कोई बात नहीं, फॉलो कर लेंगे. लेकिन ये प्रेसिडेंट के लिए जैसा है वैसा लागू होता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. क्योंकि उसमें आपका 74 क्लॉज 1 कुछ एडिशनल चीजें नहीं रखता. समझ में आ रही बात? 74 क्लॉज 1 कुछ एडिशनल लिखता, लेकिन 163 एडिशनली ये बात करता है कि जब मतलब अगर 163 को पढ़ोगे आप, देखो यहाँ पे आर्टिकल 163 recognizes governments have discretionary power in everyday administration of their states. There shall be council of ministers to aid and advise the governor in exercise of his functions, except in so far as, इसके ऊपर तो बहुत बवाल मचा हुआ है. In so far as, मानते हो मतलब सुप्रीम कोर्ट में केस है इसके ऊपर. In so far as तुम यूपीएससी की तैयारी करता है, दिल्ली के लिए जो आर्टिकल उसके ऊपर अभी केस चल रहा है. चलिए कोई बात नहीं. हाँ, कॉन्टेक्स्ट चेंज होगा, अपन पर इंटरेस्ट होगा. क्या लिखा हुआ है? इन सो फार एज
he is by or under this constitution required to exercise his function in his discretion. ये इन सो फार एज कौन डिसाइड करे? सुप्रीम कोर्ट। आगे देखिए, interestingly governors control the scope of their discretionary boundaries also. If any question arises whether any matter is or not a matter as respects which the governor is by or under this constitution required to act in his discretion, the decision of the governor in his discretion shall be final. तो अगर मैं गवर्नर हूं तो मैं बोलूंगा कि नहीं देना यार एड्रेस को, मेरा डिस्क्रिप्शन है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से मेरे हिसाब से मेरा डिस्क्रिप्शन है, मैं ये डिसाइड करूंगा कि कॉन्स्टिट्यूशन में कहां पे मुझे डिस्क्रिशनरी पावर यूज करना है और यहां पे मैंने मेरा डिस्क्रिशनरी पावर यूज किया, इसके ऊपर क्वेश्चन ये डिस्कस। यू कैन नॉट रेज क्वेश्चन ऑन दिस, व्हाई डिड गवर्नर यूज डिस्क्रिशनरी पावर, कैन नॉट बी अ क्वेश्चन। वेदर द एक्शन ऑफ गवर्नर इज लेजिटिमेट, इज रैशनल, रीजनेबल, इज नॉट आर्बिट्ररी, इतना ही क्वेश्चन पूछ सकते हो। ये नहीं बोल सकते कि गवर्नर ने यहाँ पे डिस्कशन में काम नहीं करना था या फिर यहाँ पे डिस्कशन में काम करना था, ये डिसाइड करने वाला ऑफिस सिर्फ गवर्नर का ही है। बात समझी? ये अलग है, मतलब अगर हम लोग उस तरह से देखेंगे तो प्रेसिडेंट के केस में और गवर्नर के केस में बातें अलग होंगी, सेम नहीं होगी। और इसीलिए मैं आपको पहले से एक लाइन ऑफ थॉट हम लोग पहले से रख रहे हैं कि जब आप पढ़ते हो प्रेसिडेंट के केस में प्रेसिडेंशियल डिस्कशन है तो उसका मतलब क्या होगा एक्चुअली। तो प्रेसिडेंशियल डिस्कशन और गवर्नर का डिस्कशन इसमें क्या अंतर है, आगे जाके देखेंगे हम लोग कुछ चीजें। फिलहाल के लिए इस डिस्कशन को यहाँ पे रोकते हैं मतलब कट करते हैं, और अगर आज हम लोग पहुंच पाए वहां तक तो हम लोग बात करेंगे इसके ऊपर, नहीं तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में बात होगी इसको, है ना? लेकिन तब तक के लिए मैं सजेस्ट करूंगा आपको कि न्यूज़पेपर का एक आर्टिकल छोड़ना नहीं अभी जब तक ये चल रहा है। बात समझी? एक भी नहीं छोड़ना, आप देखो कि किस तरह से और क्या क्या लिखा जा रहा है उनके ऊपर। गवर्नर इज अ पैरेलल गवर्नमेंट इन अ स्टेट is a flawed argument. It cannot be. Even if those who say that, even if somebody says like this came, in debate when 370 was abrogated. So Honorable Home Minister said that Governor of Jammu and Kashmir is the government of a legislative assembly. और जब दिल्ली का केस हुआ ना, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली एंड दिल्ली गवर्नमेंट का, तभी भी सेंटर का मानना यही था, उन्होंने एक्ट किया, अमेंड किया, मतलब जो दिल्ली के लिए स्पेशल प्रोविजन है उसमें चेंजेस किए और बोला कि दिल्ली का असेंबली इज नथिंग बट गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर। अब वो भी दैट इज आल्सो चैलेंजिंग कोर्ट। गवर्नर इन नो वे कैन बी अ पैरेलल गवर्नमेंट इन स्टेट। Right. That is not an objective of our constitution. Governor has to serve the purpose of acting or purpose of being linked between center and state. है ना? तो वो लिंक होगा सिर्फ, उससे ज्यादा कुछ गवर्नर का काम नहीं होगा, right? So from security perspective as well as from developmental perspective, from both point of view, you will find that governor is a key position and is expected to act as a bridge between center and state. तो जब हम लोग ये बोलेंगे ना कि governor acts as or is a parallel government, no one should accept this argument that it is a parallel government. It cannot be, particularly in democratic nation state. Then let me ask a question, a counter question. What happens in case of state emergency? State emergency की बात करें तब क्या होता है? तब तो फिर आप देखते हो कि सेंट्रल गवर्नमेंट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज पावर टू एस्टैब्लिश अ काउंसिल अंडर गवर्नर टू टेक केयर ऑफ स्टेट एंड in fact even legislative business of the state. So can in that case governor be called as a parallel government? Even in that case governor cannot. Let me tell you why. Because then the responsibility is not of the governor. The responsibility is basically of center. It is president who decides, not governor. Governor doesn't assume power directly from constitution, to take care of state and state administration. Only if your president says that under governor this will take place, only then governor assumes that prominent position, otherwise not. And how long will that type of administration continue? It can continue only maximum for 6 months, not more than that, right? Before 6 months there must be election and new council must be established. So from that perspective also governor cannot be considered to be a parallel government. वो parallel government नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन बात तो की जाती है, वो बहुत एकदम मुझे लगता है कि सही बात नहीं है, डेमोक्रेटिक आइडियल्स को सामने रखा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन कहीं ये सपोर्ट नहीं करता कि गवर्नर एक पैरेलल गवर्नमेंट बने। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन छोड़ दो, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली डिबेट्स में भी तो नहीं हुई बात, तो और पैरेलल गवर्नमेंट नहीं बन सकता। ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है कि इलेक्टेड गवर्नर हो। अब इलेक्टेड गवर्नर होने से वो पैरेलल गवर्नमेंट बन जाएगा कि लेजिटिमेसी उसके पास तो नहीं, वो तभी भी नहीं होगा क्योंकि वो आइडिया नहीं आपके पास। यस, yes. Yes. See, at the first place, center would always try to keep power to itself when it comes to union territories, and there is nothing wrong about it, right? Delhi doesn't enjoy the same status as that of other states, right? Though in recent, like 2019 का judgment होगा शायद, the Supreme Court said that
the governor, Lieutenant Governor of Delhi must listen to the advice or act according to the advice of Council of Ministers. Now, the matter here is, what is Supreme Court trying to do is trying to elevate the Council of Ministers at Delhi, to the position of Council of Ministers of any other state. And what is rational here? Rational is they rule with same legitimacy, with same procedure, right, as that of any other state council of ministers. So, looking at their position, though it is union territory, but looking at their position, and if you read the articles of the Constitution, you will find that they say that from state list, only specific subject, law and order and I think health, if I'm not wrong, I'm sorry, like I don't know exactly. Law and order, police, yes, correct. Law and order, police and land is with center. Rest of the matters can be taken care of by the state, right? Now, why it is with center? If we ask this question, there is logic. Logic is it is center seat, right? And it must be preserved and center must take care of. Rest of the part, for rest of the subjects, right? Even including concurrent list, the state of Delhi has full power to legislate. If it goes contrary to the law passed by the center, in that case, central laws will automatically prevail. That is true for all remaining states laws. Now, if we accept the fact that Delhi has a legislature, though of a union territory, and Delhi ka CM and then Council of Ministers, though of a union territory, practically or if we look at it from constitutional perspective, enjoys absolutely same legitimacy and same power and same position as that of any other state under constitution, right? Now, interpreting constitution functionally, right, not literally, functionally, the Supreme Court appears to be a pinpoint judgment, wherein it says that Delhi Chief Minister and Council of Ministers deserve their authority over Lieutenant, right, Lieutenant Governor. But then the central government recently amended the act and said that Lieutenant Governor would now overpower the decisions of the state. Is it wrong? No, it is not wrong. Though I said all these things, still it is not wrong because it is within central governments, or you can say parliaments, power to amend the constitution and make desirable changes in union territories, not in states. State of Maharashtra के गवर्नर को गवर्नमेंट नहीं बोल सकते आप, लेकिन दिल्ली के गवर्नर को, लेफ्टिनेंट गवर्नर को आप गवर्नमेंट बोल सकते हो. वो अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में हो सकता है. क्यों? क्योंकि स्टेट ऑफ दिल्ली इज नॉट अ स्टेट एज अ पर्सन. ये आपको समझना चाहिए. हाँ, लेकिन अब तो अरे तो फिर रिलेशन क्यों होते हैं? वही तो दूसरा लॉजिक है. मतलब डेमोक्रेटिक पर्सपेक्टिव से आप उसको देखोगे तो लॉजिक बिल्कुल सही आता है. तो इसीलिए फंक्शनल इंटरप्रिटेशन हुआ जब 2019 की 18 का वो केस था ना, उसमें. अब जो आर्गुमेंट किया जाता है ना, वो इन सो फार एज के ऊपर बात कर रही है उनकी अभी. तो देखो, मुझे नहीं लगता कि यू हैव टू लुक एट इट फंक्शनली एंड नॉट लिटरली. इफ वी स्टिक टू लिटरल इंटरप्रिटेशंस, देन आई थिंक बहुत सारे आर्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूशन के ऐसे हैं जो लिटरल इंटरप्रिटेशन के बाद आज के सिस्टम को पूरा मोल्ड कर देंगे. पता नहीं क्या होगा. तो मुझे नहीं लगता कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है उनको किसी भी तरह का प्रोमिनेंस देना चाहिए. जहां तक इलेक्टेड गवर्नमेंट की बात है, उनके ऊपर इलेक्टेड है ना, वो नहीं है स्टेट, तो क्या फर्क पड़ता है. लेकिन क्या दिल्ली के लोगों को उस तरह का रिप्रेजेंटेशन रखने का ये कॉन्स्टिट्यूशन राइट नहीं देता? क्या देता है ना. वो स्टेट बनेगा नहीं बनेगा बात अलग है ना. आप इसके लिए एग्जांपल ले लो, क्या है वो इधर साउथ ईस्ट में क्या है, एक यूनिट अंडमान के पास कनेक्शन खराब है. अंडमान की बात करें तो अंडमान का आज तक पिछले 75 ईयर्स में कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है उनका खुद का वहां पे. वो बहुत एंटी डेमोक्रेटिक चीज है. मतलब आप क्यों नहीं करवा सकते? चलो वो बाकी सिक्योरिटी कंसर्न्स वगैरह सब चीजें बाद में रखते हैं हम लोग 2 मिनट के लिए. ऐसे समझ लो ना कि दिल्ली का जो पॉपुलेशन है वो अंडमान पे है. उसी तरह का डेवलपमेंट हुआ है और फिर भी अगर हम लोग उनको ना देते, वो एक डेमोक्रेटिक राइट ना देते अपना एक लोकल रीजनल गवर्नमेंट चूज करने का, तब तो हम लोग बहुत बड़ा मतलब मिसयूज कर रहे हैं कुछ प्रोविजंस का कॉन्स्टिट्यूशन. तो मुझे लगता है कि वो लेजिटिमेटली इलेक्टेड गवर्नमेंट है, यूनियन टेरिटरी का ही रहे, लेकिन जितना डोमेन उनके लिए कार्य किया गया ना, उतने डोमेन पे उनका ही राज होना चाहिए. मतलब बेसिकली उनका ही डोमिनेंस होना चाहिए. उसके ऊपर गवर्नर जनरल शुड नॉट, लेफ्टिनेंट गवर्नर should not interfere at all. I don't think that is a wise thing. अगर वो हम लोग कर लेंगे ना एक बार, if we set that pain, that will continue, and court should not let it set. I don't think the court will permit central government to do that. मुझे नहीं लगता, क्योंकि वो करना बहुत disastrous हो. हाँ. Yes. Why does it admit that I feel it is, we cannot detach politics from what is going on, unfortunately. The answer lies there. And they started, as I said, right from 370 का allocation. तो मुझे लगता है कि पूरा core ही होती है कि they don't want particular political party to gain the prominence. चला पूरे को गए. Article 72. नहीं नहीं नहीं. 72 पार्डन. अब पार्डन के साथ साथ हम लोग और कुछ स्पेसिफिक पावर्स देखेंगे एग्जीक्यूटिव को. The other specific executive power is granting pardon. President may grant pardon, reprieve, respite, or remission of punishment, or suspend or remit, commute the sentence of any person convicted for any offence. That is given in 70. The power may be invoked in 3 contexts. First, in cases where punishment is and sentence is by court martial. Second, punishment
or sentences for offense against a law passed by parliament. And third, in case of a death sentence. तीन चीजें मेरे ख्याल से प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है अगर वो पूछा जाता है तो सिंपल है कुछ नहीं कोर्ट मार्शल के केस में प्रेसिडेंशियल पार्डन की बात आएगी if a person is convicted for offense against central law that is law passed by the parliament in that case you may seek a pardon from president and in case of a death penalty so if the death penalty is for state law or central law doesn't matter if a person is awarded a death penalty in that case he has full right to approach the president approach means basically file a petition mercifully right so for these or in these three conditions or situations pardoning powers can be invoked otherwise pardoning powers are not invoked the provision has attracted many controversies है ना वो आप पढ़ लेना आपके बुक में मिल जाएगा लक्ष्मी है ना कौन से केसेस में होता है ना चलिए आगे देखते हैं तो provision has attracted many controversies pardon is not private act of grace the power to grant the pardon is constitutionally reposed in the heads of the state and therefore constitutes a responsibility of great significance right historically exercised almost by mostly all head of the states ये कोई नई बात नहीं है pardon वाली अगर आप ancient और medieval India में भी जाके देखोगे तो heads of the state used to exercise pardoning power right king used to be the fountain head of justice है ना असं काहीतरी ऐकलं असेल तुम्ही ऐकलं कसं right so king used to grant the pardons you know? The Supreme Court has said the power rests on the rationale that the judicial process may go occasionally wrong as such entrusting some high authority to scrutinize the validity of threatened denial of life or personal liberty or freedom is worthy undertaking article 72 does that under the constitution so basically we are accepting the fact that probably judicial process may go wrong and then to correct that judicial error if any we are giving a chance to ourselves not to the convicted convict का तो राइट है चांस नहीं दे रहे आप convict जो है ना someone who is awarded with death penalty it is his right his or her right to approach the highest appellate tribunal or maybe highest appellate authority उसका right we are giving a chance to ourselves है ना किस चीज का if there was an error we can correct it so the scrutiny takes place of what scrutiny takes place of all those procedures followed while awarding that particular punishment right and the grounds on the basis of which that punishment has been given and would be scrutinized then accordingly you know the president will take decision president ही decision लेंगे ऐसे मानते हैं ठीक है So Article 72 is doing that. Also, pardon is not an extension or an interference with judicial process. So please understand this. अगर कहीं बुक में ऐसे आपको कहीं मिले कि ये प्रेसिडेंट का जुडिशियल पावर है तो वो कट करो पार्ट इट इज नॉट जुडिशियल पावर ऑफ द प्रेसिडेंट बिल्कुल भी प्रेसिडेंट के पास इस तरह की जुडिशियल पावर्स नहीं होते ठीक है ये एग्जीक्यूटिव पावर है ये आपको समझना पड़ेगा दिस इज नॉट जुडिशियल पावर दिस इज प्रैक्टिकली स्पीकिंग एन एग्जीक्यूटिव पावर एग्जीक्यूटिव इज अगेन प्लीज अंडरस्टैंड दैट एग्जीक्यूटिव इज नॉट ट्राइंग टू रिव्यू नीट लक्ष्य देवर एग्जीक्यूटिव इज नॉट ट्राइंग टू रिव्यू द जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट नॉट एट ऑल दे कैन नॉट In fact, this power is given to the president not to review the judgment of the Supreme Court and then grant the pardon. No. He will take a fresh look at all facts and materials of that particular case. The president doesn't sit in the capacity of court here. The person who seeks the pardon cannot directly demand, a personal meeting with the president to explain the case. Nor the convict nor his representative. I mean, say like an advocate. They will only write an application and submit it to the house. The presidential office. एक्चुअली प्रेसिडेंशियल ऑफिस के पास नहीं जाता होम मिनिस्ट्री के पास जाता उसके पास आएंगे हम थोड़ी देर लेकिन ये पार्डन एक्ट ऑफ ग्रेस नहीं हो सकता पब्लिक पावर है पब्लिक डोमेन में यूज किया जाता है प्राइवेट ऑथोरिटी नहीं है प्रेसिडेंट की प्राइवेट पावर नहीं है लेकिन क्या ये डिस्क्रिशनरी है तो वो देखेंगे हम लोग थोड़ी देर में सो व्हाट डिड कोर्ट से दैट इट इज नॉट टू बी अंडरस्टूड एज एन इंटरफेरेंस विद जुडिशियल प्रोसेस क्योंकि क्यों नहीं ऐसे इंटरफेरेंस क्यों नहीं है क्योंकि यार जुडिशियल प्रोसेस खत्म हो चुका सुप्रीम कोर्ट ने भी डेथ पेनल्टी अवॉर्ड कर चुके अब इसके बाद जुडिशियल प्रोसेस कुछ नहीं होता बात समझिए आप हाईकोर्ट में था केस सुप्रीम कोर्ट में अपील की और उस वक्त प्रेसिडेंट आके बता रहे कि नहीं मेरे पास ये फैक्ट्स और मैं देखूंगा ये तो वो इंटरफेरेंस इस तरह का कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन नहीं है तो जुडिशियल प्रोसेसेस आर ओवर जुडिशरी हैज सेड दैट इन आवर ओपिनियन दिस फेलो इज टू बी हैंग टिल डेथ एंड एग्जीक्यूट द ऑर्डर ये बोल देता है जुडिशरी ये नहीं बोलता कि मर्सी पिटीशन होने के बाद एग्जीक्यूट करो नहीं एग्जीक्यूट द ऑर्डर तो फिर इमीडिएट एग्जीक्यूट क्यों नहीं करते देन यू विल सीक अ रिप्लाई जस्ट अ मोमेंट आई थिंक रिप्लाई भी होना चाहिए मुझे एग्जैक्टली नहीं आता So then you will seek a reply. Basically, you will seek a sort of, you will bring stay on execution of the order. जो ऑर्डर था, समझ लो वो 31 जनवरी 2023 को एग्जीक्यूट होने का प्लान बना हुआ है, तो आप उसके ऊपर स्टे लाते हो, है ना? आप देख लेना बाद में वो रिप्लाई है कि क्या है, डिस्पाइट रिप्लाई शायद होना चाहिए, डिस्पाइट नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से. आप देख लेना फिर मुझे अभी याद नहीं आता. So what you do, you brought a stay on the execution of the order and give yourself a chance to appeal in the higher court. Sorry, not higher court. Higher court की और otherwise in this case president, है ना? पार्डन के लिए आप अपील करोगे. और इसीलिए वो जुडिशियल प्रोसेस में इंटरफेरेंस नहीं है. It stands on wholly different plane. What do you mean by that? It has nothing to do with judicial. It has nothing to do with judicial processes also. No procedural law applies here. कोई procedural law नहीं apply होता. This is basically an executive domain where an executive would take decision on their own. होता है वो खुद अपने आप से डिसीजन लेंगे. इसमें कोई प्रोसीजर फॉलो करने की जरूरत नहीं है. Consequently, rules of natural justice do not apply here.
The reason being they don't sit in the form of a court, right? Rules of natural justice are applicable when it comes to court and court procedures, right? And not in case of executive. बात समझी? Everybody. Huh? So court is bound by procedures. Probably going out of procedures, I would say like beyond procedures. In some cases, you may need to go beyond procedures to search for reality and then judge the case. Court cannot do that beyond certain limit. Court procedural rules or laws जो है ना उसके beyond नहीं जाता. Court is bound by the rules, procedural rules. Executives are not. Executives are not. The discretion of court is very minimum. बहुत कम है डिस्क्रिप्शन. क्यों? क्योंकि इतने सारे लॉ लिखे गए. आप सीआरपीसी सीकेसी पढ़ लो आपको पता चलेगा कि इतने सारे लॉज लिखे गए और वो सब एनफोर्सिएबल है. कोर्ट में कोई कल को कोई एक प्रोसीजर फॉलो नहीं हुआ तो आप क्वेश्चन रेज कर सकते हो कि प्रोसीजरल लेकिन ना इस मैटर में. और कोर्ट देखता है अगर आपके पास मेरिट है. बात समझिए आप एग्जीक्यूटिव के पास जाओ 10-10 साल तक पढ़े पार्डन की एप्लीकेशन कोई नहीं पूछ रहा. क्यों? प्रोसीजरल लॉ से बाउंड नहीं है वो. हाँ ये बात अलग. कोई हम लोग उसमें कोई सब्सटेंटिव रीजन ढूंढ सकते हैं बात अलग है. लेकिन अदरवाइज दे आर नॉट बाउंड बाय प्रोसीजरल लॉ. एवरीबडी है ना. सो इन मेकिंग द डिसीजन द प्रेसिडेंट एंजॉयज डिस्क्रिशन ऑफ वाइडेस्ट एम्पलीट्यूड. मैं नहीं बोल रहा कोर्ट बोल रहा है. कौन एंजॉय करता है डिस्क्रिशन? प्रेसिडेंट ऑफ वाइडेस्ट एम्पलीट्यूड. He may re-examine the facts of the case, reassess the evidence, take into account newly disclosed information if any, and fashion appropriate remedies keeping in mind the personal circumstances of those pleading for mercy. ये सब ध्यान में रखना. कोर्ट इसके ऊपर भी सोचता है, ऐसी बात नहीं है. लेकिन फिर एग्जीक्यूटिव के पास, फॉर एग्जीक्यूटिव्स देयर इज अ वाइडर एम्पलीट्यूड, और आई वुड से एग्जीक्यूटिव्स हैव गॉट वाइडर डिस्क्रिशनरी स्कोप टू डिसाइड दिस मैटर, और इसलिए पार्डन जाता है एग्जीक्यूटिव के पास. वाइड डिस्क्रिशन हैज इनवाइटेड एंगेज ऑन मेनी ओकेजन्स. बोल दिया कोर्ट ने वाइडेस्ट एम्पलीट्यूड मतलब हमेशा तथास्तु करेंगे नहीं ऐसा बात है ना. अरे यार ये मेरे भतीजे का वो तथास्तु चलो जिसका कोई नहीं लगा वो सड़ते रहो जेल में. For 10 long years there were people those who have been kept behind the bars without commuting their sentences. कब commute समझता है? Without commuting their sentences they have been kept behind the bars and for every single day this sword of death penalty used to hang on them. That later on was considered by Supreme Court as violation of Article 21. The jail, those who are convicted and detained for punishment, like punished punitive detention, जिनको मिला हुआ, for them, if they are to be hanged, they are to be hanged as soon as possible, right? You are in fact keeping them hanging for 10 long years without knowing the fact that whether they will get any mercy or not. Examples इसके काफी सारे. किसी केस का नाम लेना अच्छा नहीं है. तो मर्सी देना है नहीं देना ये ऑलटुगेदर डिफरेंट क्वेश्चन ऑफ एथिक्स है, क्वेश्चन ऑफ फिलोसॉफी है, क्वेश्चन ऑफ लॉ भी है ना, क्वेश्चन ऑफ पॉलिटिक्स भी है. बट अदरवाइज इफ द मर्सी पिटीशन हैज बीन फाइल्ड इट मस्ट बी फाइनलाइज्ड विद इन रीजनेबल टाइम. रीजनेबल टाइम फ्रेम में वो फाइनल होना चाहिए. ठीक है, 10 साल तक आप नहीं रख सकते. यू कैन नॉट गेन पॉलिटिकल माइलेज ओवर सच थिंग्स. समझ में आ रही बात कुछ? सो वाइड डिस्क्रिशन, सी व्हाट कोर्ट से. The Supreme Court, long before Kerr pondered over the nature of power pardon. It is public power, court state. One that must be exercised with intelligence, informed care, and honesty. This was reiterated in Maruram versus Union of India. Though white, the power cannot run riot. Religion, caste, color, political loyalties, for example, are irrelevant to the discretionary metrics of Article 72. Court says that Article 72 का जो scope है ना, इसमें religion, race, caste, sex, place of birth, loyalties, political ideologies, and etc. don't find any place in 72. That means your president is expected to use his power under 72 as rationally as possible, right? He cannot, use the yardstick of these things while deciding a particular matter. So court is very strict and very clear about it. Everybody. So if this applies to governors, president's discretionary power. Let's forget about which discretion we are talking about as of now. है ना, मतलब हम लोग पार्डन की बात कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल के लिए छोड़ दो. तो ये वाला लॉजिक जो ये लाइन देख रहा है नंबर से सिविल ऑफ इंडिया में, ये लॉजिक तो आप अभी तमिलनाडु के गवर्नर को नहीं लगा सकते. पॉलिटिकल आइडियोलॉजी आपकी कौन सी, इससे क्या फर्क पड़ता है? आप कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस हो, आपका जो कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन या फिर ड्यूटी है वो आपको परफॉर्म करना चाहिए. तो वो तो फिर केरला के गवर्नर या फिर महाराष्ट्र के गवर्नर या फिर किसी और गवर्नर को भी लागू तो सबको होगा. बस बात ये है कि आप कितना कन्वीनियंटली उससे एक्सक्यूज निकाल सकते हो और सिचुएशन को कॉम्प्लिकेट कर सकते हो. बात समझिए. नाउ कैन वी यूज दिस पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन द रीसेंट केस? मुझे लगता है ये ग्राउंड तो डेफिनेटली यूज कर सकते हैं. ये ऑब्जर्वेशन क्योंकि पार्डन के केस में तो उसमें बात अलग है, लेकिन ग्राउंड्स से हम लोग यूज कर सकते हैं कि इन ग्राउंड्स पे किसी भी डिस्क्रिशनरी ऑथोरिटी ने अपने डिस्क्रिशन में काम नहीं करना चाहिए. The widest amplitude in Kerr's view, notwithstanding the idea of reasoned discretion, remains prominent in many disciplines. Kerr's में बोला रहेगा widest amplitude, लेकिन कोर्ट ने आप बिल्कुल बोलना नहीं, कोर्ट ने बोला reasoned discretion होगा, unreasonable discretion नहीं होगा, क्योंकि उसकी कॉन्स्टिट्यूशन में जगह ही नहीं ना. समझो इस चीज को. छोटा कभी क्या बोलो प्रयोग करो. आप हमने बात की ना आर्टिकल 19 प्लस 2 में रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन. रीजनेबल निकाल दो ना वर्ड, कौन सी बड़ी बात है? रिस्ट्रिक्शंस होंगे सिर्फ, तो आपको मालूम है रिस्ट्रिक्शन के इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं, कितने डिजास्टरस हो सकते हैं.
है ना? तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन की बात करेंगे तो सिर्फ डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स बिलीव्ड इन द एबिलिटी ऑफ गवर्नर सिटिंग इन दैट पोजीशन, बिकॉज अगर आपको शायद हमने इससे पहले बात की नहीं, वो डॉक्टर अम्बेडकर, नेहरू एंड के मुंशी ने उन लोगों को बताया ना, वहां पे बैठे हुए थे, आप बिल्कुल चिंता नहीं करो, ये अपॉइंटेड गवर्नर रहेंगे ना तो भी अपने दिमाग से काम करेंगे, किसी पॉलिटिकल मोटिव से नहीं काम करेंगे, मतलब नॉन पॉलिटिकल, नॉन पार्टीशन एंड अ पर्सन ऑफ एक्सेप्शनल कैलिबर या फिर पॉलिटी हम लोग देखेंगे कि वो आएंगे गवर्नर। आप तो देख रहे हो कितने एक्सेप्शनल है गवर्नर, है ना? तो उस कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो मुझे लगता है कि जहां जहां डिस्कशन आएगा कॉन्स्टिट्यूशन में, जहां जहां आदत डालो उससे पहले रीजन पढ़ो आप, क्योंकि वो वैसे ही है, वो लिखा नहीं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो है ही नहीं वहां। तो एनी डिस्क्रिप्शन whatsoever and exercised by whichever authority under constitution or under any law must essentially be reasoned. It cannot be unreasonable discretion, है ना? अगर unreasonable हो गया तो सिंपल सा स्टोरी है, एकदम constitution is not supreme, the governor and his discretion is, है ना? ये किसी भी लॉजिक में फिट नहीं बैठेगा, है ना? कल को अगर गवर्नर के आर्टिकल्स अमेंड करते हैं हम लोग तो गवर्नर फिर भी सुप्रीम रहेंगे क्या? नहीं रहेंगे। तो डिस्क्रिप्शन का मतलब सिंपल है, जहां जहां डिस्क्रिप्शन आएगा वहां वहां वो रीजन डिस्क्रिप्शन ही हो। क्लियर एवरीबडी? इसीलिए मैंने आपको बोला, मैंने पहले ही पूछा था क्वेश्चन, अगर आपको किसी लेक्चर से आ रहा है, ये किसने बोल दिया कि प्रेसिडेंट अपना डिस्क्रिप्शन खुद नहीं यूज, अगर जहां डिस्क्रिप्शन है वहां पे रीजन डिस्क्रिप्शन होगा, है ना? तो प्रेसिडेंट ने अपना डिस्क्रिप्शन यूज करने में दिक्कत क्या है? बस क्वेश्चन है, मुझे आंसर नहीं मालूम, आगे देखिए। So public power in all forms has limits. पढ़ो इसको, देखो देखो, सुप्रीम कोर्ट, public power in all forms has limits and the right to equality is not irrelevant to Article 70. अब ये मरोड़ा वाले केस में वो इशू आया था राइट टू इक्वालिटी का, तो जैसे अभी थोड़ी देर पहले we were discussing, he said that there is a principle of interpretation that law must be read as a whole, पूरा पूरा, है ना? हमने इसके ऊपर बात कर सकते हैं पहले, जैसे मैंने आपको, अगर आपको याद है तो हमने बात की थी वो गोल्डन टाइगर की फंडामेंटल राइट, है ना? आर्टिकल 21 के बाद पहले वाले केस में उन्होंने बोल दिया कि 21 और 19 को पहले करेंगे, बाद में जाके उन्होंने सब कुछ क्लब करके एक जगह रखा, क्यों? सिंपल सा कारण एकदम, है ना? हर एक कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल ब्रॉडर कॉन्स्टिट्यूशन स्कीम में ही रखा गया, वो हर आर्टिकल मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन बनाता है। तो आप किसी एक आर्टिकल का मीनिंग ढूंढोगे तो आपको क्या ढूंढना है, वो कॉन्स्टिट्यूशन में कितना सिग्निफिकेंट है और वो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या उसका कुछ ऐसा हो ही नहीं सकता। कोई एक इंडिविजुअल ऑफिसर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, कोई एक, जैसे गवर्नर की बात कर रहे हैं हम लोग, वो ये बोलेंगे कि माय डिस्क्रिप्शन इज माय डिस्क्रिप्शन एंड इट इज एब्सोल्यूट, ये नहीं हो सकता। तो वो किसी दूसरे कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे थे और वो किसी दूसरे कंट्री के स्टेट के गवर्नर थे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और इंडियन स्टेट के नहीं हो सकता, क्योंकि आप जितना चाहे डिस्क्रिप्शन यूज करो, वो डिस्क्रिप्शन अल्टीमेटली कॉन्स्टिट्यूशनल टचस्टोन पे या फिर लिटमस पेपर पे टेस्ट होगा, आप टेस्ट पास करोगे तो डिस्क्रिप्शन बिल्कुल सही है। छीना नहीं जा रहा डिस्क्रिप्शन है ही आपको, रीजन होगा। तो रीजनेबलनेस के क्या क्राइटेरिया रहेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में मिलेंगे ना? डेमोक्रेसी क्राइटेरिया हो सकता है कि नहीं रीजनेबलनेस? फ्रीडम हो सकता है कि नहीं हो सकता? लिबर्टी हो सकता है, इक्वालिटी हो सकता है, जो भी प्रीएम्बल में लिखा गया वो हो सकता है, वो भी हो सकता है, उसके साथ साथ फेडरेशन हो सकता है ना? ये सभी बेसिक चीज है, बहुत आपको एक्स्ट्रा लॉजिक लगाने की जरूरत ही नहीं है, एकदम बेसिक चीज है। ये रीजनेबलनेस का टेस्ट बिल्कुल बन सकता है किसी भी डिस्क्रिशनरी अथॉरिटी के यूज ऑफ पावर के बारे में बात करेंगे, समझते हैं? As such, the law of pardon in India endures in flux. The extent and grounds of judicial review are still insufficiently clear. ये I believe this line has potential of 15 marks in UPSC maths. ये लाइन कल को अगर पार्डन के ऊपर कुछ आता है तो आप प्रिपेयर करके रखना, भूलना नहीं। मैं बता रहा हूँ कि इसके ऊपर क्वेश्चन आ ही सकता है। Something that is in flux, something that is yet not clear, will be decided by court and there will always be debate about it. है ना? इस प्रीलिम में हो सकता है कि गवर्नर के डिस्क्रिशनरी पावर के ऊपर क्वेश्चन है, पॉसिबल है, हो सकता है मेंस में, करते हैं एवरीबॉडी। चलिए आगे चलते हैं। इंडिया एग्जीक्यूटिव आल्सो एंजॉय लेजिस्लेटिव पावर्स, है ना? एग्जीक्यूटिव को देखते हैं। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, दिस इज नथिंग बट लेजिस्लेटिव पावर टू डेलीगेट समथिंग। मतलब क्या हुआ, यहां भी आया था G20 वाले, कौन थी? डेलीगेट्स, है ना? पूरा सब कुछ साफ सफाई करके गए, मतलब करवा के गए, है ना? चलिए क्या 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 थे वो डेलीगेट्स, अभी भी कुछ है, कुछ लोग बचे हुए हैं, तो फिर भी साफ दिख रहा है सर। क्या होता है मतलब डेलीगेट्स का? करेक्ट, सो दे आर नॉट द वन दोज हु एक्चुअली कैरी द पावर, दे बेसिकली रिप्रेजेंट द वन हु कैरीज द पावर एंड ऑन बिहाफ ऑफ देम यू नो दे कैन एक्ट एंड टेक डिसीजंस, राइट? सेम यहां पे डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, क्या बना रहे हो आप? लॉ बना रहे हो। लॉ बनाने का पावर किसके पास है बताओ? लेजिस्लेचर के पास, है ना? हम लोग बात किसकी कर रहे हैं यहाँ पे? एग्जीक्यूटिव। सो इसका मतलब ये हुआ था कि एग्जीक्यूटिव लॉ बनाएंगे, जी हाँ वो बनाएंगे, उसी की तो बात कर रहे हैं हम लोग, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, है ना? है ना? तो बताओ आपका कॉन्स्टिट्यूशन कौन सी आइडिया को प्रैक्टिस करता है? सेपरेशन ऑफ पावर्स की। स्ट्रिक्ट सेपरेशन तो बिल्कुल नहीं है, है ना? कितना फ्लेक्सिबल है,
हाँ चेक बैलेंस तो बोलने के लिए बहुत आसान है, वो एक्चुअली ढूंढना कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत डिफिकल्ट, लेकिन वो सही है चेक्स एंड बैलेंसेस, बट चेक्स एंड बैलेंसेस इज नॉट एन आइडिया ऑफ सेपरेशन, वो उसका इफेक्ट है। बैलेंस पर पता है तो इफेक्ट है वो। सेपरेशन ऑफ पावर्स आपको कहीं डायरेक्ट स्टेटमेंट नहीं मिलेगा कि ये सेपरेशन ऑफ पावर क्या है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर, ये पर्टिकुलर ऐसा कुछ नहीं, हो ही नहीं सकता, बहुत डिफिकल्ट है उस तरह के कंक्लूजन में आना, ठीक है। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, डेडिकेटेड लेजिस्लेटिव पावर्स होते हैं। रूल मेकिंग पावर्स आर प्रोवाइडेड फॉर इन वैरायटी ऑफ प्रोविजंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ दीज आर गिवन इन आर्टिकल 77 क्लॉज 3, द प्रेसिडेंट शैल मेक रूल्स फॉर मोर कन्वीनिएंट ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। है ना, आपके देखो सिलेबस में ना वो मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट लिखा हुआ है, उसके ऊपर क्वेश्चंस भी आते हैं, मैं कोशिश करता हूं कि आपको उसके ऊपर एक कम से कम एक लेक्चर तो अलग से मैं ले लूं, लेकिन वही पॉइंट है यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना, कि क्या आपका कॉन्स्टिट्यूशन अंडर 77 क्लॉज 3 बोलता है कि प्रेसिडेंट विल मेक रूल्स फॉर मोर कन्वीनिएंट ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट, है ना, तो प्रेसिडेंट रूल बनाएंगे मतलब खुद लिखेंगे रूल, कुछ हद तक आप ऐसे समझ लो कि खुद ही लिख दिया प्रेसिडेंट, है ना, तो क्या उसको लेजिस्लेटिव सैंक्शन रहेगा, मतलब विल दोस रूल्स बी कंसीडर्ड एज इक्विवेलेंट टू अ लॉ passed by the parliament? Yes, they will be. And if anyone, any member in the council or in any department, undertakes an action that is not in line with those rules, right? It would be considered as an ultra virus action. It would be considered as an action that doesn't exist in the eyes of law, right? And if somebody takes an action that goes contrary to the rules, right, would be punished with rules, I'm saying. So President under 73 clause 77p has got this power to make rules. आप आपके बुक में पढ़ोगे रूल मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, है ना, लक्ष्मीकांत ने लिखा है यही रूल मेकिंग पावर। तो रूल मेकिंग पावर क्या है, लेजिस्लेटिव पावर है कि एग्जीक्यूटिव पावर है? लेजिस्लेटिव पावर दिया एग्जीक्यूटिव को, है ना, क्योंकि वो लॉ बना रहा है ना, इसलिए आर्टिकल 13 क्लॉज 3 में हमने देखा था वहां पे लिखा हुआ है रूल लॉज बाय लॉज, है ना, वहां पे रूल भी वर्ड, रूल कहां से आता है, ये देखो रूल मेकिंग पावर, ये भी लॉ का ही एक कैटेगरी है, a species of law, right, but has not been passed in the legislatures, ना सेंट्रल ना स्टेट लेजिस्लेचर, देखिए प्रेसिडेंट ने लॉ बना दिया, है ना, एकदम बिल्कुल गलत वर्डिंग यूज किया मैंने, प्रेसिडेंट ने लॉ बना दिया, ऐसे नहीं होता, प्रेसिडेंट फॉर्मुलेटेड रूल्स, इतना देखोगे आप, वो रूल का पोटेंशियल वही है जो किसी एक लॉ का होगा, अगर पार्लियामेंट मतलब अगर जो लेजिटिमेट बॉडी टू फ्रेम रूल्स है वही पास करती है तो वही उसका उतना ही इंपॉर्टेंस है। इसमें क्या किया जाता है, सो known as rules of business, and these instruments allocate and define the zone of authority of ministers and their subordinates, जो नहीं आपके सिलेबस में लिखा हुआ डिफरेंट डिपार्टमेंट एंड मिनिस्ट्रीज, राइट, एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क्स अमंग दोस डिफरेंट मिनिस्ट्रीज, ये प्रेसिडेंट रूल से करते हैं और उनका स्कोप डिफाइन होता है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का स्कोप डिफाइंड है ना, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक स्कोप डिफाइंड है, उसके बियॉन्ड नहीं काम कर सकते हो, आपको ये समझना पड़ेगा ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है ना, नहीं तो बिल्कुल कितना आसान है ना कि मैं यार मिनिस्टर हूं सेंटर का, कौन सा डिपार्टमेंट है ये, अच्छा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन वाला, चलो ये मैं तो मिनिस्टर हूं, मैं जो बोलूंगा यहाँ पे कर लो, आपका ऑथोरिटी नहीं है, मतलब आप मिनिस्टर किसी दूसरे डिपार्टमेंट के हो, आप सेंटर में, लेकिन आप नहीं ऑथोरिटी चला सकते किसी भी दूसरे डिपार्टमेंट के किसी दूसरे ऑफिशियल्स के ऊपर, वहां पे रेगुलेशन नहीं कर सकते। देयर हैज बीन स्पेसिफिक एंड क्लियर कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ ऑल गवर्नमेंट फंक्शंस एंड इट हैज टू बी गाइडेड, अदरवाइज देयर वुड बी कंप्लीट केओस। तो आप क्या करना ना, आप जाके नेट पे देखोगे ना, गवर्नमेंट की वेबसाइट पे आप देखो डिपार्टमेंट्स कौन से, आप देखो पहले मिनिस्ट्रीज कौन से, उसमें क्या हायरार्की है ना, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, उसके बाद कैबिनेट आएगा, कैबिनेट के अंदर आप देखो क्या क्या है ना, कैबिनेट के बाद इंडिपेंडेंट मिनिस्टर्स रहेंगे, आपको मिलेंगे इंडिपेंडेंट मिनिस्टर्स। देखो अब ये सभी मिनिस्टर्स जो मतलब प्राइम मिनिस्टर के अंदर एक डिपार्टमेंट, एक नहीं मतलब काफी सारे डिपार्टमेंट है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर के अंदर आप देखो कितने सारे डिपार्टमेंट्स हैं, वैसे आप कैबिनेट मिनिस्टर के अंदर देखो कितने सारे डिपार्टमेंट्स हैं, है ना, उसके अंदर डिवीजन रहेंगे, डिपार्टमेंट के अंदर डिवीजन रहेंगे, वो डिवीजन कौन है, उसको कौन हेड करता है, उनका क्या काम होता है, यू कैन गेट ऑल डिटेल्स ऑनलाइन, मतलब वो बिल्कुल इट इज अवेलेबल ऑनलाइन, पूरा आपको ट्री मिल जाएगा एकदम बड़ा, सॉर्ट ऑफ पिरामिड सेंटर पे, और हर एक ब्लॉक जो रहेगा पिरामिड का, है ना, वो एक चैनल से गवर्न होता है, एकदम क्लियर कट चैनल से गवर्न होता है, मतलब हर डिपार्टमेंट सॉरी हर मिनिस्ट्री में आपको एक अलग पिरामिड दिखे, और ये सब पिरामिड मिला के एक पिरामिड बनाते हैं पूरा, जिसके टॉप पे प्राइम मिनिस्टर। बात समझ में आ रही है सबको? इनके जो रूल्स है ना, रूल्स ऑफ बिजनेस, इसलिए बोला गया रूल्स ऑफ बिजनेस, ये रूल्स प्रेसिडेंट बाय लॉ, मतलब प्रेसिडेंट वो रूल्स बनाता है, प्रेसिडेंट बनाते हैं मतलब बेसिकली द कंसर्न सेक्रेटरीज टू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, कल को आप जाके बैठोगे आप ही बनाओगे वो रूल्स, वो बने हुए, मोस्ट ऑफ देम आर फेयरली डिजाइन्ड एंड दे आर इन प्लेस, एट टाइम्स यू मे नीड टू मेक सम अमेंडमेंट्स, राइट, द सजेशंस वुड बी ऑफ एग्जीक्यूटिव्स, वो मिनिस्टर के पास जाते हो, मिनिस्टर बोलेंगे प्रेसिडेंट को कि दिस शुड बी साइंड एंड अकॉर्डिंगली दैट रूल विल बी फॉलोड इन दैट पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, राइट, रूल मेकिंग पावर, ये तो एग्जीक्यूटिव है ना, एग्जीक्यूटिव की बात कर रहे हैं, इनको रेगुलेट करने का पावर एग्जीक्यूटिव के पास ही कैसे दिया गया, ये तो लेजिस्लेचर ने लॉ बना के रेगुलेट करना चाहिए था उनको, नहीं समझा आपको मैंने क्या क्वेश्चन पूछा, मैंने ये बोला हम लोग ये रूल्स ऑफ बिजनेस जो है ये किसके लिए बनाया रूल्स ऑफ बिजनेस, ये सभी आईएएस ऑफिसर्स रहेंगे डिपार्टमेंट्स में, मिनिस्टर्स है वो तो एग्जीक्यूटिव है ना, है कि नहीं, कैबिनेट मिनिस्टर्स कौन है, एग्जीक्यूटिव है, प्राइम मिनिस्टर एग्जीक्यूटिव है, तो एग्जीक्यूटिव ही खुद अपने आप को गवर्न करने के लिए खुद ही रूल बना रहा है,
गलत नहीं हो गया ये? पार्लियामेंट के पास होना चाहिए था पावर कि वो रूल बना। बोलिए ऐसे क्यों डेलीगेटेड लेजिस्लेशन में ये पहला पॉइंट क्यों आ रहा है? अगर आप इसको समझ जाए तो आपको डेलीगेटेड लेजिस्लेशन ही पूरा समझ जाएगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ डेलीगेशन एंड पर्टिकुलरली इन डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। हाँ यस नाही पण असेल ना पार्लमेंटनी पास केल्यानंतर इम्प्लिमेंट करते नहीं तो क्वेश्चन चुकीचा समझना। सिंपल है यार, मैं आज बैठा हूँ ऑफिस में ना, है ना, मैं आज बैठा हूँ, मुझे लग रहा है कि कुछ कुछ प्रोसीजर है ऑफिस में, यहाँ पे गलतियां हो रही है एंड वी नीड देम टू बी करेक्टेड इमीडिएटली। मैं जाके इमीडिएट बोलूंगा कि चलो ये रूल्स दिस जीआर आता है ना, ये अभी से इंप्लीमेंट होगा। इसके लिए पार्लियामेंट को हमेशा थोड़ी बुलाएंगे लोग। बेसिकली इट इज नीड ऑफ सर्कमस्टेंसेस एंड टाइम दैट सपोर्ट्स डेलीगेशन ऑफ लेजिस्लेशन। समझ में आ रही बात? जैसे आप अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को देखोगे, डीएम होते हैं ना, डीएम हैज एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स। उनके पास जो डिस्क्रिप्शन है, जितने लेवल का डेलीगेशन डीएम के पास है, वो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी। If the circumstances demand, the DM has power to override the directions, of higher authorities also. Higher authorities के डायरेक्शन पे ओवरराइड कर सकते हो, उसके पास वो डिस्क्रिप्शन है और उस तरह से रूल्स बना सकते हैं अपने डिस्ट्रिक्ट में। पार्लियामेंट्री लॉ कुछ भी है, उन्होंने बना दिया रूल, वो ऑर्डर होता है डीएम का और वो चलेगा वहां पे, है ना। तो अब डीएम तो वेट नहीं कर सकता या सिचुएशन सामने है। जैसे समझ लो वो जो दिल्ली राइट्स में आप एसपी हो, समझ लो वहां पे खड़े हो एकदम रस्ते पे, आप देख रहे हो तो फायर का ऑर्डर क्या, लेजिस्लेचर आएगा, फिर उसके बाद लॉ बनाएगा, फिर आपको पावर आएगा और उसके बाद आप ऑर्डर, मतलब ऑफ कोर्स लाइक द लॉ इज ऑलरेडी इन प्लेस, बट आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल दैट मेक्स नो सेंस। कटेगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन डेलीगेटेड लेजिस्लेशन इज अर्जेंसी ऑफ टाइम। अभी जरूरत है, अभी इमीडिएटली उसको करना। तो सो दैट इज द लॉजिक हियर। सो as I said, known as rules of business, these instruments allocate and define zone of authority of ministers and their subordinates. They have statutory force and are binding. Actions consistent with these rules become actions of government. Conversely, actions in contravention of these rules are unlawful. Simple है मतलब। तो जो लॉ का होता है वही इनका नहीं, जो इंपॉर्टेंस लॉ को है वही इंपॉर्टेंस रूल्स को, रूल मेकिंग को। जिस तरह से एज इफ यू कैन से दैट प्रेसिडेंट इज मेकिंग लॉ, डोंट राइट इट दिस वे, जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन। प्रेसिडेंट लॉ नहीं बना ना, लिखो आप कभी लिखोगे भी। That's right. 77 clause 3। सबसे बड़ी चीज आपके कॉन्स्टिट्यूशन में है 123 चालू होने से पहले आप कॉन्स्टिट्यूशन के डॉक्यूमेंट में पढ़ना, वहां पे क्या लिखा हुआ है। लॉ मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, सॉरी लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट लिखा है। प्रेसिडेंट की लेजिस्लेटिव पावर, लॉ बनाएंगे क्या प्रेसिडेंट की? बिल्कुल बनाएंगे, लॉ ही बनाएंगे, बस आप बोलोगे नहीं उसको लॉ, आप उसको ऑर्डिनेंस बोलोगे। तो क्या डिफरेंस है सर ऑर्डिनेंस और लॉ में? कोई नहीं, कोई भी डिफरेंस नहीं एक्चुअली देखा जाए। सो फॉर इट्स इफेक्ट इज कंसर्न, राइट, सो फॉर इट्स ऑथोरिटी इज कंसर्न, नो डिफरेंस, जीरो डिफरेंस। सिर्फ एक चीज हो सकती है, द लाइफ ऑफ एन ऑर्डिनेंस इज शॉर्टर देन लॉ। ये स्टेटमेंट सही नहीं है, हमेशा हर जगह पे सही नहीं है। हो सकता है कोई लॉ पास किया गया और 3 महीने में विड्रॉ कर दिया गया, तब तो ऑर्डिनेंस से कम ही चला लॉ को। ऑर्डिनेंस तो 6 महीने चल सकता है। अच्छा, ऑर्डिनेंस का टाइम कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ। योर कॉन्स्टिट्यूशन इज साइलेंट अबाउट द लाइफ ऑफ एन ऑर्डिनेंस। कितने महीने चलता है ऑर्डिनेंस? किसने बताया आपको? कहाँ लिखा हुआ बताओ? 6 मंथ चलता है, कहाँ लिखा हुआ? कहीं नहीं लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन। Constitution doesn't support this. The Constitution doesn't make a mention of 6 months as a time of ordinance. It only says that the ordinance would cease to operate from 6 weeks or in 6 weeks from the date of assembly of the House. Sorry, Parliament. 6 महीने का टाइम, 6 वीक का टाइम, उतने में खत्म होगा। बाकी आपका कॉन्स्टिट्यूशन कुछ नहीं है। अगर आप लाइफ देखोगे ऑर्डिनेंस की तो 6 मंथ्स प्लस 6 वीक, इतनी पूरी लाइफ होनी चाहिए। ये 6 मंथ्स एकदम सिंपल लॉजिक है इसका, मुझे लगता है आपको मालूम है कहां से आता है। मैक्सिमम टाइम वही रहेगा, क्योंकि ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर इज नॉट अ कॉन्करेंट पावर विद पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट, है ना। पार्लियामेंट जब लॉ बनाएगा तब पार्लियामेंट बनाएगा, प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस नहीं प्रोमलगेट कर सकते। सो वन ऑफ द प्री कंडीशंस फॉर ऑर्डिनेंस टू बी इन इफेक्ट इज वन ऑफ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन। सो बेसिकली पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन। So when parliament is not in session, only in that case president can promulgate an ordinance. Otherwise president cannot. But still it is very substantial and very important power. You are almost trying to hand over legislative business to the president. And practically speaking, not president, but then, in practice it is council of ministers, those who would suggest president to promulgate an ordinance. Then उसका draft तो council बनाएगा और president को देंगे, president will promulgate. Otherwise, ordinance has all those limitations as or which are applicable to any ordinary law that is passed by the parliament. Can constitution be amended through an ordinance? नहीं, अरे जरूरत है। अब बताओ, पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन और जरूरत है कॉन्स्टिट्यूशन अभी अमेंड करने की जरूरत है। कैन इट बी अमेंडेड?
question is, can constitution be amended by ordinance? सोच समझ के बताना मुझे आप. ऑर्डिनेंस का पर्पस ये है कि पार्लियामेंट जब नहीं है तब, if there is need, है ना, demand of time, you must promulgate an ordinance and make required changes in law. नहीं? And what convinces you that the president cannot amend the constitution by an ordinance? कर सकते नहीं कर सकते? कहां पढ़ा आपने नहीं कर सकते? Not mentioned in the constitution. There are several things which are not mentioned in the constitution. क्या लिखा हुआ है 368 में? ऐसे लिखा नहीं है ना, ऐसे लिखा नहीं है ना, जहां लिखा नहीं है वहां पे वो भी पॉसिबिलिटी की कर सकते हैं. जैसे 245 में ये नहीं लिखा हुआ कि एग्जीक्यूटिव्स कैन नॉट मेक लॉ. 245 सेज दैट पार्लियामेंट में मेक अ लॉ फॉर होल टेरिटरी. वहां पे ये नहीं लिखा हुआ कि एग्जीक्यूटिव्स कैन नॉट मेक लॉ. तो एग्जीक्यूटिव्स कैन मेक लॉ. डेलीगेटेड लेजिस्लेचर तो देखिए अब. हाँ, that will do no. Yeah, of course. Like we will get it then when Parliament assembles. कोई भी ऑर्डिनेंस वैसे भी पार्लियामेंट में जाएगा ही ना. ऐसे तो नहीं होगा कि नहीं जाएगा. अच्छा, विड्रॉ कर लिया अमेंडमेंट करके वापस विड्रॉ कर लिया अमेंडमेंट को, मतलब किसी ऑर्डिनेंस को विड्रॉ कर, अच्छी बात है, वो परमानेंट नहीं रहा. तो पार्लियामेंट में ऑर्डिनेंस तो जाना ही, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो या फिर कोई और सब्जेक्ट मैटर ऑर्डिनेंस का, पार्लियामेंट में तो जाना ही है. और वो अमेंड मतलब पार्लियामेंट तो उसको स्क्रूटिनी करेगा उसमें. तो क्या लग रहा है आपको, अमेंड करना चाहिए आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डिनेंस के थ्रू? अच्छा नहीं, आपको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए क्वेश्चन नहीं है, हो सकता है कि हो सकता है. क्या करूं मैं, बताऊं अभी कि आप सर्च करोगे? है ना, सर्च करने का रूल है. देखिए ऑनलाइन नहीं सर्च, आपको आंसर मिल जाएगा आपके कॉन्स्टिट्यूशन में. कुछ किसी और डॉक्यूमेंट की जरूरत ही नहीं, उधर लिखा हुआ है बिल्कुल. ढूंढोगे रिलेवेंट प्रोविजन जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन के, उसको देख लेना, देखिए आपको मिल जाएगा आंसर. है ना, नेक्स्ट लेक्चर में बताना मुझे कि अमेंड कर सकते नहीं कर सकते. हाँ, मग 107 मध्ये पण लिहिलंय की पार्लमेंट मध्ये लॉ मध्ये सॉरी नो पार्लियामेंट हैज लेजिस्लेटिव पावर, ऐसे 245 में भी लिखा हुआ है. अब देखो ऑर्डिनरी लॉ में की पावर किसका है? पार्लियामेंट, है ना. तो वो कहां से आता है? कॉन्स्टिट्यूशन से आता है. सही बात है, गलत है ना. तो सुप्रीम कोर्ट ने तो केशवानंद भारती ने बोल दिया ना कि अमेंडमेंट एक टाइप ऑफ लॉ ही है, बोला था ना. तो हम लोग क्यों नहीं ये मान सकते कि अच्छा अगर ऑर्डिनरी लॉ का ये हो सकता है, क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेंस हो सकता है. अमेंडमेंट के लिए क्यों हो सकता है ऑर्डिनेंस? हो, इकडे आपण विड्रॉ करू ना. कोर्ट कैन डिक्लेअर द ऑर्डिनेंस टू बी इनवैलिड. तो कॉन्स्टिट्यूशन में कोई कोर्ट देखो वन क्या है, अमेंडमेंट है ना कॉन्स्टिट्यूशन 99 अमेंडमेंट हो गया, कोर्ट ने बोला अमेंडमेंट गलत, तो इंप्लीमेंट तो नहीं हो रहा ना. वो है अभी कॉन्स्टिट्यूशन में 124 ए बी सी हमने डाल दिया कॉन्स्टिट्यूशन में है ही, लेकिन इट इज नॉट रिपील्ड बाय लॉ, है ना. इट इज डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल. तो वो कोर्ट बोल देगा. द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज नो. प्रेसिडेंट कैन नॉट प्रोमलगेट एन ऑर्डिनेंस फॉर अमेंडिंग कॉन्स्टिट्यूशन. नहीं कर सकते. बस इसका एक्सप्लेनेशन आप बताओगे क्यों. ठीक, आंसर भी दे देंगे. नहीं कर सकते प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस, नहीं ऑर्डिनेंस कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड नहीं कर सकते. और मैं बताऊं आपको इसका स्पेशल मेजॉरिटी और इससे कोई लेना देना. आप मतलब ये लॉजिक लगा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उससे काफी इंपॉर्टेंट चीज कुछ है जो आपको सोचनी पड़ेगी. तो सोचना और बताना मुझे. फिलहाल ऑर्डिनेंस नहीं. Ordinances are not bylaws, rules, orders, or delegated legislation of some other kind. They are equivalent of parliamentary legislation. कुछ bylaw rule regulation नहीं है, ये parliamentary legislation का equivalent type है. Right. Oh, there can be emergency. वो प्रेसिडेंट बाद में एक्सप्लेन करेंगे ना लेजिस्लेचर को, क्योंकि लेजिस्लेचर पूछेगा उनको इतनी जल्दबाजी क्यों थी आपको, ये बताओ कि ऐसी इमरजेंसी कौन सी थी कि आपको ऑर्डिनेंस से कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना पड़ा. ये तो पूछ सकता है लेजिस्लेचर. तो वो बात भी नहीं है कि इमरजेंसी, ऐसी इमरजेंसी नहीं हो सकती कि कॉन्स्टिट्यूशन इमीडिएटली अमेंड करना पड़ा. बिल्कुल हो सकता है, वो भी पॉसिबल. तो मैं तो बता रहा हूं आपको, ऑर्डिनेंस से कॉन्स्टिट्यूशन नहीं अमेंड होता. बस बताना क्यों नहीं होता. आगे चलते हैं. So they are equivalent of parliamentary legislation. Two conditions must be met for president to invoke 120. At least one of the houses of the parliament must not be in session, and he must be satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action. Must be satisfied. President का satisfaction यहाँ पे बहुत important है ना. एक तो एटलीस्ट वन ऑफ द हाउसेस मस्ट नॉट बी इन सेशन. प्रीलिम्स के लिए याद रखना है इसको. अगर हाउसेस है दोनों भी सेशन तो बात खत्म. प्रेसिडेंट के पास ऑर्डिनेंस पावर नहीं है ना. दिस आर्टिकल इमीडिएटली गोज इनटू डॉर्मेंसी. डॉर्मेंट होगा, एक्टिव नहीं रहेगा. जैसे ही प्रेसिडेंट ने लोकसभा का सेशन
प्रोरोग कर दिया 123 इमीडिएटली एक्टिव हो जाना, ऑटोमेटिकली एक्टिव होगा. यहाँ पे प्रोरोगेशन का ऑर्डर है, यहाँ पे 123 वैलिड. समझी बात? अरे कड़क. यहाँ पे समनिंग का ऑर्डर है, हाउस समन हो गया, 123 डॉट है. सो सिंपल. एंड सो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट इज नॉट concurrent power with parliament to legislate. What does that mean? Not simultaneous, parallel. पार्लियामेंट भी है और इधर बैठ के प्रेसिडेंट भी अपना ऑर्डिनेंस बना रहे हैं, पार्लियामेंट भी लॉ बना रहे हैं. ये नहीं होता है ना. बात समझी? तो क्या प्रेसिडेंट ये नहीं कर सकते कि क्योंकि प्रेसिडेंशियल ऑर्डर ही आएगा प्रोरोगेशन का, टू प्रोरोग इज टू कट शॉर्ट और टू स्टॉप, है ना, हाउस की जो सिटिंग है उसको बंद करना. तो क्या प्रेसिडेंट प्रोरोग नहीं कर सकते हाउस प्रीमैच्योर प्रोरोगेशन, जल्दी प्रोरोग कर दिया यार, 2-3 दिन वेट नहीं कर सकता, ऑर्डिनेंस चाहिए मुझे. तो प्रेसिडेंट कब प्रोरोग करेंगे कब नहीं, इसके ऊपर भी लिमिटेशंस. Unless and until there is adjournment sine die declared by a speaker and a message is sent to the president by council of ministers, right? Till then president will not prorogue the house. लेकिन power to prorogue the house is of president, and your constitution says that it is discretionary power. Let me tell you. And so that is very difficult to interpret. ठीक है, कोई बात नहीं. फिलहाल के लिए 123 को आप समझो. जैसे ही parliament is not in session, 123 becomes active. The moment parliament comes into session, 123 becomes dormant. लगा? Right. So what is prerequisite here? Both the houses must be in session. If either of the house is not in session, इसमें से कोई एक भी ना हो सेशन. क्योंकि कैसा होता है ना कि जो समनिंग ऑर्डर जाते हैं ना राज्यसभा के मेंबर्स को और लोकसभा के मेंबर्स को, उसका डेट सेम नहीं होता. कभी कभी अलग अलग डेट पे होता है. राज्यसभा शायद 2 दिन लेट या फिर 2 दिन जल्दी मतलब समन हो सकता है, तो वो 2 दिन भी वैलिड है 120. पार्लियामेंट समन होना है ना, सिर्फ राज्यसभा नहीं करते करेक्ट समन, है ना. सो एक तो देयर मस्ट एग्जिस्ट दिस पर्टिकुलर सिचुएशन, एंड देन प्रेसिडेंट मस्ट बी सैटिस्फाइड दैट सिचुएशन डिमांड्स एन इमीडिएट लेजिस्लेशन ऑन अ पर्टिकुलर मैटर. प्रेसिडेंट का सेटिस्फैक्शन जरूरी है कि अभी जरूरत है हमें मैटर पे कोई लॉ बनाने की जरूरत, बना सकते हैं. ठीक है. एलआईसी ऑर्डिनेंस वैसे बहुत सारे लॉ है, वैसे ऑर्डिनेंस वाले बाद में पास होकर लॉ बने हुए बहुत सारे मिल जाएंगे, आप बहुत ज्यादा मिल जाएंगे. चलो ऐसे बोलते हैं ना, हमने बहुत अच्छे से इस आर्टिकल का मिसयूज किया हुआ है. ठीक है, तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे लॉज है. या फिर रिसेंट जो था ना एग्जांपल फार्म लॉस, सॉरी, उसको भी आप देख सकते हो, यूएपीए को भी देख सकते हो आप. ये सभी ऑर्डिनेंस वाले लॉज है जिसके ऊपर डिबेट स्किप करने की कोशिश करता है आपका एग्जीक्यूटिव. कोशिश तो वही रहती है, लेकिन क्योंकि पार्लियामेंट कैन आस्क देम व्हाट वाज एन इमरजेंसी, कारण दाखवा नोटीस, प्रेसिडेंट का पाठवून देतात, साधे शब्दात सांगायचं. तो तुम एक्सप्लेन करो भाई इतना आप कैसे सेटिस्फाई हो गए, है ना, प्रेसिडेंशियल सेटिस्फैक्शन. आपको सेटिस्फाई करने वाले ऐसे कौन से सर्कमस्टेंसेस एग्जिस्ट कर रहे थे उस वक्त जो आपको, जो आपने लॉ बना दिया. यू कुडंट वेट फॉर अस, है ना. समझिए बात. ये प्रेसिडेंट को राइटिंग में पार्लियामेंट में रखना पड़ता है जब वो ड्राफ्ट के साथ ऑर्डिनेंस के ड्राफ्ट उसके, और उसके बाद उसके ऊपर फिर आगे डिसीजंस होते हैं. समझ में आ गया एवरीबॉडी? हाँ. Yeah, of course it wasn't. It wasn't. Wasn't an emergency. There cannot be. There cannot be, because the moment your court starts setting the benchmark or maybe some sort of formula, right? When can which condition would qualify for emergency or such an urgent need? That would be highly incorrect. At the first place, there cannot be one set formula which would take into account all types of emergency. One. Second, if at all court is trying to do it, right, court is entering into discretionary domain of executives and thereby disrespecting the idea of separation of powers. And third and most important thing is, it should not be decided by Congress, neither by legislature, but only by executives. Right? We sitting here may say that the farm laws was not an emergency. We may say it, but we don't know. Probably the agricultural minister might be of the opinion that there is an emergency and we should not wait and we should bring in a law. Right? Or at the max, there can also be a point of view that if we do not debate in public, which is incorrect, right? If we do not debate in public a lot, right? And if we bring in a law, and if there is any alteration or change that is required, which we will do in later time, right? But at this moment, let us bring in a law. Let us not have a public debate on this. We know the law is very much required, and let us bring it, because otherwise, if the law comes into public domain, there would be great deal of opposition. So to avoid that, also probably somebody may resort to ordinance, as was the case with farm laws. So वो हो सकता है. Yes, but then practically speaking, in democracy, there should be public debate on every decision that is being taken. But executives may take, this particular route to avoid the public debate and then avoid possibility of an unpopular image of themselves in public. तो ये possible है कि वो कर सकते हैं. Otherwise मुझे लगता है कोई formula हो सकता है उसको define करना. The satisfaction is of Council of Ministers. That is how the provision has come to be understood and practiced in India. Satisfaction किसका है? ऐसे हमने माना आज तक, ये वो लाइन का मीनिंग. तो आप इसको कन्वेंशन बोलोगे चाहते हो. सेटिस्फैक्शन इज नॉट ऑफ अ प्रेसिडेंट बट ऑफ, क्या लगता है आपको प्रेसिडेंट का सेटिस्फैक्शन प्रेसिडेंट का होना चाहिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का होना चाहिए? जहां तक ये पर्टिकुलर केस की बात, इसका होना चाहिए प्रेसिडेंशियल सेटिस्फैक्शन होना है ना. तो नहीं,
गलत हो जाएगा। क्यों? President is not well versed with the circumstances on ground. The Council of Ministers are in right position to take into account if there is real demand for framing framing a law. अगर डिमांड है तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सही पोजीशन है और सही पोजीशन में है जो ये डिसाइड कर सकते हैं कि अमेंडमेंट सॉरी लॉ की जरूरत है कि नहीं। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट का सेटिस्फैक्शन प्रेसिडेंट का नहीं होगा, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का ही होगा। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि प्रेसिडेंट का डिस्क्रिशन यहाँ पे मूव हो गया एब्सोल्युटली नहीं। प्रेसिडेंट में सेंड दैट पर्टिकुलर एडवाइस अगेन फॉर रिकंसिडरेशन ऑफ काउंसिल एडवाइस एंड रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकते हैं। कंसीडर इट अगेन इफ यू रियली नीड अ लॉ एट दिस मोमेंट, राइट? इन केस ऑफ फार्म लॉज, जैसे देखिए ना फार्म लॉज के बारे में क्या हुआ, ऑर्डिनेंस था ना वो, था कि नहीं, राइट? लॉ बनने से पहले भी प्रोटेस्ट हो रहे थे ना, इसका लॉ बनने से पहले जब वो ऑर्डिनेंस था तभी भी प्रोटेस्ट हो रहे थे, अगर आपको मालूम है तो उस वक्त क्या प्रेसिडेंट की रिस्पांसिबिलिटी नहीं थी अंडर हिज ओन डिस्क्रिशन दैट आई शुड विड्रॉ द लॉ, आई शुड विड्रॉ द ऑर्डिनेंस। तो यहाँ पे कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज है जो हम लोग डायरेक्टली में एफर्मेटिव नहीं हो सकता इसके लिए ये बोलना कि प्रेसिडेंट शुड हैव विड्रॉन द लॉ, right? Without taking into account the advice of Council of Ministers. But then President cannot be a mute spectator of things happening because of an ordinance. He should have at least asked Council of Ministers to reconsider the ordinance and withdraw it. I don't know whether President of India did that or not, but he should have. And if he would have done that, let me tell you, there has been no Council of Ministers. There is no Council of Ministers. There would not be any Council of Ministers which would disrespect or can have a courage to disrespect the demand of the President of India. ये बाद में बुक्स लिखे जाएंगे, इसके ऊपर पता चलेगा हमें कि एक्चुअल क्या हुआ था, कि किसी ने बोला नहीं कि वो फार्म लॉ विड्रॉ करो, लोग प्रोटेस्ट करो, फार्म ऑर्डिनेंस। ये कोई लोग जाने के बाद ही उनकी कहानियां बनी है, तो कहानियां इनकी भी बनी है, तो पता चलेगा, आप बिल्कुल पढ़ोगे उसको। लेकिन प्रेसिडेंट के पास क्या ये पावर नहीं होना चाहिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को ये बार-बार पूछे कि भाई ऑर्डिनेंस तो पास किया लोगों का, अगर if the people are protesting against it, it is our duty to reconsider the ordinance. President under your constitution definitely deserves this particular position and this particular discretion to ask a question to the Council of Ministers. Do we need to reconsider the ordinance? If yes, in given circumstances, we should withdraw it or reconsider it. That is there in the Constitution. Constitution making. So satisfaction, yes, it is absolutely correct that the satisfaction should be or must be of Council of Ministers in this particular case. It cannot be absolutely a dismission of the President. So that in series of cases, Supreme Court has repeatedly held that the presidential satisfaction in 123 is not subject to judicial review. It is purely subjective. Parliament has complete discretion to decide whether or not to enact the legislation. मतलब ordinance pass किया ना, ordinance presidential satisfaction था, right? Ordinance has been passed. Now what? Can that ordinance be questioned in court of law? Sorry, basically that satisfaction be questioned in court of law, not the terms of ordinance, but satisfaction. Supreme Court in number of cases has said that no, it does not. It need not to be questioned in court of law. Right? In some cases, court has said that it can be questioned in court. But here comes the logic, very simple and very direct. Ordinance पास किया, कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं आपकी, मतलब हाँ फंडामेंटल राइट्स की बात तो जा सकते हो आप कोर्ट में, कॉन्स्टिट्यूशन की किसी प्रिंसिपल और किसी प्रोविजन के अगेंस्ट तो आप कोर्ट में जा सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पार्लियामेंट तो है ना वहाँ पे, the ordinance whatsoever is the subject matter of ordinance would be kept in the parliament. Parliament would test whether the executives have promulgated an ordinance with genuineness or not. If the parliament thinks that yes, ordinance was necessity of that time, है ना, right? And it was genuine effort on the part of executive, the parliament will enact it in the form of a law, है ना, है कि नहीं? तो आपको कोर्ट की क्या जरूरत है satisfaction टेस्ट करने की? तो जब भी पार्लियामेंट आता है, मुझे लगता है कि हमें बिल्कुल आचार्य बारी को याद रखना चाहिए। यार वो पार्लियामेंट उसके ऊपर कंट्रोल रख पाएगा या फिर जेन्युइननेस टेस्ट कर पाएगा जिसके पास उतना नंबर है ना, अदरवाइज तो बहुत डिफिकल्ट है ये जेन्युइननेस टेस्ट करना। लेकिन आप ये समझ लो फिर भी पार्लियामेंट में ऑर्डिनेंस के ऊपर डिबेट होगा, और वो डिबेट सफिशिएंट है एग्जीक्यूटिव को एक्सपोज करने के लिए, अगर ये दिखता है कि ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर का मिसयूज हो, और ये रिसेंटली भी हो चुका है पार्लियामेंट्री डिबेट्स में, ये बात हो चुकी है। तो आपको ये समझना है कि पार्लियामेंट इज स्टिल अ इंस्ट्रूमेंट दैट कैन बी यूज्ड अगेंस्ट एग्जीक्यूटिव व्हेन द ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर हैज बीन मिसयूज्ड और इज मिसयूज्ड। गलत। So the executives too, court say, has complete discretion to decide whether or not to promulgate an ordinance. Executive के पास पूरा डिस्क्रिप्शन है, जरूरी नहीं है कि सिचुएशन है, सर्कमस्टेंसेस आर डिमांडिंग है तो दे कम अप विद ऑर्डर, इट इज देयर चॉइस, दे मे नॉट, एंड दे मे वेट फॉर पार्लियामेंट टू assemble, or they may summon an emergency session of the parliament. There is a possibility of that also. समझ में आ गया? If so required, your executives can summon parliament, and that can be called as an emergency session of the parliament, wherein the law would be kept on the table, the bill would be kept on the table and would be, the parliament can conduct the discussions and can pass it in the form. ये possible है। तो executive का पूरा discretion है, तो हमें बिल्कुल इसमें interfere करने की जरूरत नहीं। As it is the ground of review, ordinary applicable to exercise of executive power are inapplicable to the ordinance. हमने देखे थे ना एग्जीक्यूटिव पावर के जो ग्राउंड्स कॉन्स्टिट्यूशनल होना चाहिए, याद आ रहा है आपको? फंडामेंटल राइट को वायलेट नहीं करेगा, बियॉन्ड द स्कोप ऑफ लॉ नहीं होगा, कॉन्ट्ररी टू पैरेंट लॉ नहीं होगा, एवरीवन, है ना?
वो सभी रिव्यू के ग्राउंड यहाँ पे ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर के लिए नहीं लागू। क्यों? क्योंकि वहां पे कोई पार्लियामेंट्री या फिर कोई दूसरा चेक था नहीं वहां। वो जो हमने देखा था लास्ट लेक्चर में, आपको देखा तुम्हारा दोस 5 पॉइंट्स एग्जीक्यूटिव पावर को रिव्यू करते हो आप कोर्ट में, उसके लिए जो भी वहां पे पॉइंट्स दिए थे, those points are applicable to executive action, executive power. The reason is that executive action cannot be questioned by any other organ, cannot be scrutinized by any other organ. Only court can do that, and so you can challenge it to court. This particular action of executive, this particular action of executive that is making law under 123 or promulgating an ordinance under 123 can be checked by parliament, can be scrutinized by parliament, and can be validated or invalidated by parliament depending upon the circumstances. Right? That doesn't mean that you cannot approach court. You can still approach court. That's not the story. The matter is, do you have an extra check? Yes, you do have in the parliament. समझी बात? क्योंकि किसका पावर यूज कर रहे हैं एग्जीक्यूटिव यहाँ पे? पार्लियामेंट का पावर यूज कर रहे हैं। The power doesn't actually belong to executive. Given the fact that we divide legislature and executive and judiciary, आपके कॉन्स्टिट्यूशन में executive के पास ही पावर दिया हुआ है, लेकिन otherwise law making power किसके पास होना चाहिए था? by norms, set norms, वो legislature के पास होना चाहिए था। हम किसकी बात कर रहे हैं? एग्जीक्यूटिव की बात कर रहे हैं। तो एग्जीक्यूटिव जब ये लॉ बनाएगा या फिर ऑर्डिनेंस पास करेगा, लेजिस्लेचर का उसके ऊपर स्टैंप लेगा। बेसिकली इसका मतलब ये है ना, जुडिशरी का स्टैंप की जरूरत नहीं है। करेक्ट। एग्जीक्यूटिव एक्शन में आपको जुडिशियल स्टैंप चाहिए। क्यों? लॉ हैज ऑलरेडी बीन पास। नाउ हु कैन डिसाइड वेदर लॉ प्रिवेल्स और एग्जीक्यूटिव एक्शन प्रिवेल्स? ऑफ कोर्स योर कोर्ट वुड डिसाइड, एंड ऑफ कोर्स लॉ वुड प्रिवेल, बट वेदर a particular executive action is within the scope of law or not, it is to be decided by court and not by legislature. That's why the review can take place. I hope आपको समझ में आ रही है बात। कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, लेकिन बस वही है कि आप मेरे साथ अगर क्लास में बैठ के रेजोनेट कर पाओ तो मुझे लगता है कि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी मैच हो जाए तो सब समझेगा। They are products of legislative power, vested in executive. Ordinances are temporary. They must be laid before the House once the Parliament summons. The duration of ordinance, however, is not directly provided for in the Constitution. 123 clause 2 merely says that unless properly enacted within 6 weeks from re-assembly of the Parliament, they cease to operate. डायरेक्टली नहीं लिखा हो, ये याद रखिए प्रीलिम्स में, है ना? जैसे लास्ट लेक्चर में बताया मैंने, उसी तरह से क्वेश्चन आएगा, which of the following is provided for in the Constitution? Life of an ordinance? No, it is not provided for in the Constitution. है ना? मतलब life of an ordinance is 6 months and 6 weeks. No, not given in the Constitution directly. It is ultimate effect of provisions of the Constitution. Right? They may also cease to operate if both houses of the Parliament disapprove them by resolution, or if the President withdraws the ordinance. President can at any time withdraw the ordinance. Yeah. And Parliament can also disapprove the same. In state of Orissa versus Bhupendra Kumar Bose, even if an ordinance lapses, ये मतलब है, I guess किसी ने बोला था ये पहले, even if the ordinance lapses, all actions completed during the period of an ordinance, an ordinance is imposed remains permanently valid. So basically, when ordinance was imposed, even if it lapsed, even if it is withdrawn, even if it is declared unconstitutional, right? In that case, all the actions which were conducted under ordinance while it was imposed would remain valid. उसको नहीं चेंज कर सकते आप। 1st of January को ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट किया, 23rd को, है ना, हमने उसको इनवैलिड डिक्लेयर करा दिया, या फिर विड्रॉ किया गया, या फिर रेजोल्यूशन इसके अगेंस्ट पास हुआ। 1 से लेकर 22 तक जो भी एक्शंस और एक्टिविटीज वो वैलिड रहेगी। ये ऑर्डिनेंस के साथ दिक्कत है। अच्छा, ये किसने बोला ऐसे? सुप्रीम कोर्ट ने बोला ऐसे। ये इंटरप्रिटेशन बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल है। क्यों? आप देखिए, सो दे विल रिमेन परमानेंटली वैलिड, ओनली सीजेस टू ऑपरेट प्रोस्पेक्टिवली। प्रोस्पेक्टिवली सिर्फ बंद हो। This view has serious implications. The executive can effectively generate permanent changes in law when or even through failed legislative action. Executive क्या कर सकते हैं? परमानेंट चेंजेस करवा सकते हैं। लॉ भले विड्रॉ, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। हो गया ना, चेंज हो गया परमानेंट। फार्म लॉज के लिए ऑर्डिनेंसेस बने और वो ऑर्डिनेंस ने जो चेंजेस करवाए वो अभी भी वैलिड है। इन प्रैक्टिस आपको चेंजेस देखेंगे, बस रिस्पांसिबिलिटी स्टेट के ऊपर डाली गई है, स्टेट देखी जाएगी। The law has been withdrawn but during that time. So the problem with this particular interpretation, whatever changes have been made during the life of an ordinance before either it is to be withdrawn or declared unconstitutional or whatever, right, or ceases to operate, वो changes permanent रहेंगे जब तक वो ordinance ना आता है। उसके बाद भी रहेंगे। So ordinance can lapse only prospectively, can cease to operate only prospectively, retrospectively. This means that whatever changes have been done, right, from 1st of January to 22nd of January, would be permanent changes. For example, by an ordinance, public distribution system को हमने कुछ change किया उसमें। कोई भी क्या एग्जांपल ले लें हम लोग? चलिए मानते हैं कि ये एग्जांपल ले लेते हैं कि जो फूड ग्रेन डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं उसका जो अमाउंट है उसमें हमने कम कर दिया।
बाद में क्योंकि बहुत पब्लिक डिबेट हुआ इसके ऊपर, तो वो लॉ भी विड्रॉ कर लिया या फिर लॉ ही पास नहीं। तो अब जो चेंज किया ना आपने, वो चेंज परमानेंट रहेगा। 5 केजी आप देते थे, आप 3 बोला था आपने ऑर्डिनेंस में, आप 3 ही रहे, 5 नहीं होगा। आप 5 कब कर सकते हो? आप दूसरा लॉ पास करके पहले ऑर्डिनेंस को आप क्रॉस कर सकते हो, अदरवाइज 5 नहीं। बात समझी? प्रोस्पेक्टिवली, हाँ, प्रोस्पेक्टिवली का मतलब क्या हुआ कि 20 सेकंड ये बोला गया कि ऑर्डिनेंस विड्रॉ करो, प्रेसिडेंट ने विड्रॉ कर लिया, लेकिन 20 सेकंड तक, फर्स्ट से लेकर 20 सेकंड तक ये डिसीजन पहले हो चुका था कि 5 केजी नहीं देंगे, 3 केजी। अब 20 सेकंड के बाद भले ही ऑर्डिनेंस विड्रॉ कर दिया गया, वो 3 केजी ही चलेगा, 5 नहीं होगा। तो दैट चेंज वुड रिमेन। आप समझिए, प्रोस्पेक्टिवली मतलब आज वो, क्योंकि रेट्रोस्पेक्टिवली का मतलब क्या होगा, 22 को आपने बोला ना कि विड्रॉ कर लिया, तो एक का जो रियलिटी है या फिर एक ऑर्डिनेंस आने से पहले वाली जो पोजीशन थी, वो 23 के बाद वापस रिस्टोर हो, तो ऐसे नहीं होगा। तो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं होगा, प्रोस्पेक्टिव होगा। समझिए बात? डीसी वाद और स्टेट ऑफ विकार, आप इसको पढ़ो, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। है ना? कितने साल? 14 लॉन्ग ईयर्स। फॉर 14 लॉन्ग ईयर्स आप एक ही ऑर्डिनेंस को चला रहे। रीप्रोमलगेशन इज कॉन्स्टिट्यूशनल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं। ऑर्डिनेंस रीप्रोमलगेट किया जा सकता है, वही उसका पर्पस है। आपको समझना चाहिए कि देखो, एक सेशन में नहीं बिल पास तो होना चाहिए, ऑर्डिनेंस रखा उसी सेशन में होना चाहिए, क्योंकि इमीडिएट अर्जेंसी थी ना, ऑर्डिनेंस पास किया था आपने, तो इस सेशन में बाकी जो भी ऑर्डिनरी बिजनेस हाउस है उसको बाजू में रखिए, आप पहले वो बिल के ऊपर काम करोगे और उसको लॉ में कन्वर्ट करेंगे जिसके ऊपर ऑर्डिनेंस पास। लेकिन व्हाट इफ द पार्लियामेंट फेल्स टू पास इट इन द सेम टाइम, तो उस वक्त क्या करेंगे फिर आप? उस वक्त क्या होगा? सिंपल, उस केस में आप उसको रीप्रोमलगेट करो, क्योंकि पार्लियामेंट पास नहीं कर पाया। बात समझिए? पार्लियामेंट का वो लॉ अब सेकंड सेशन में जाएगा, तो तब तक के लिए फिर 6 महीना क्या करेंगे, मतलब 2-3 महीना क्या करोगे आप? रीप्रोमलगेशन। तो उस केस में जो जहां पे रिलेवेंस है या फिर जहां पे लॉजिक है, रीजन है, वहां पे आप उसको रीप्रोमलगेट कर सकते हैं। दिस वे रीप्रोमलगेशन इज नॉट अनराइट, बट देन रीप्रोमलगेशन with the intention to sideline the legislature, right, to bypass legislative process, वो तो कहीं वो otherwise भी unconstitutional। बात समझिए आप? तो इसका मतलब ये हुआ कि वो 14 साल में जितनी भी गवर्नमेंट्स आए, 3 तो कम से कम आ ही रहेंगे, तो उन्होंने क्या किया? जो वो कर रहे थे वो आगे कंटिन्यू करते रहो रिप्रोमलगेशन। मतलब ये केस भी हो सकता है हमारे पास इंडिया में, यही समझने के लिए सफिशिएंट है कि हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन को किस लेवल तक डिसरिस्पेक्ट कर सकते हैं। फॉर 14 लॉन्ग ईयर्स कोई एक बंदा नहीं मिला बिहार के असेंबली में जो जाके क्वेश्चन रेज करे कि अरे भाई ये कितना ऑर्डिनेंस कितने दिन चलेंगे, मतलब रिप्रोमलगेशन पर 14 लॉन्ग, 3 इयर्स टू 14 इयर्स का रेंज है, बहुत सारे ऑर्डिनेंस, एक कोई ऑर्डिनेंस नहीं है। कोर्ट ने बोला रिप्रोमलगेट करो, है ना? लेकिन देखो, in an exceptional, it is an exceptional method of enacting legislation into regular one amounts to an assumption of power by the executive. This is what is court's reasoning. It is contrary to India's constitutional scheme and therefore unconstitutional. इसलिए रिप्रोमलगेशन नहीं होता। एक्सेप्शन दिया कोर्ट ने, क्या एक्सेप्शन है पढ़ो? Due to want of time, repromulgation may continue, and this creates a refuge ground for executives to take shelter under. मतलब क्या बोलेंगे? पार्लियामेंट के पास टाइम नहीं है, पार्लियामेंट इज बिजी इन बजट, तो उनके पास टाइम नहीं है, तो रिप्रोमलगेशन नेक्स्ट सेशन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिजनेस हाउस, तो लॉ तो हमने रखा हुआ है, बस वो लॉ अभी तक पास नहीं हुआ, सॉरी बिल रखा हुआ है, बिल बस पास नहीं हुआ अभी, तो ये सेशन होने के बाद वापस लिखो। अब वैसे पेंडिंग बिल तो जमाने से पड़े हुए पेंडिंग बिल, क्या हुआ उसका? So this cannot be an excuse, practically speaking. Who is responsible here? Business Advisory Committee के चुनाव और फ्लोर लीडर कौन होता है? बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का चेयरमैन। चलो कोई बात नहीं, स्पीकर होते हैं, स्पीकर चेयरमैन है। अरे उनको समझना चाहिए कि यार ऑर्डिनेंस टेबल पे है तो उसको पहला प्रायोरिटी दो तुम। एवरीथिंग एल्स कैन वेट, एवरी लेजिस्लेशन कैन वेट, ऑर्डिनेंस कैन नॉट। समझी बात? बट दिस हैज क्रिएटेड अ सॉर्ट ऑफ रेफ्यूज फ्रॉम और एग्जीक्यूटिव, इसका यूज करके एग्जीक्यूटिव अपना ऑर्डिनेंस मार्गी लाओ सकता है। मॉडरेट जुडिशियल पावर्स कल देखते हैं, हाँ नेक्स्ट सेक्शन आज नंबर जुडिशियल पावर्स एंड वेट नो अभी देखते हैं, ये इतना खत्म कर देंगे, 4-5 मिनट है। हमने बात की है इसके ऊपर, इसको ज्यादा टाइम नहीं लगता। 103 के ऊपर बात की हमने। Judicial powers. Aspirants to both houses of parliament must satisfy eligibility criteria. Article 103 empowers president to adjudicate if a person who are already members have fallen foul of those criteria. In making these decisions, the president relies on opinion of election commission.
The Election Commission acts in quasi judicial capacity and must therefore adhere to the principles of nationalism. Because this is basically a matter of deciding rights of a person. So, your Supreme Court, sorry, Election Commission serves as a court, not full court. I mean, say like not a similar court as you have in Supreme Court or maybe in judiciary, but then it follows the principles of natural justice by deciding the matter pertaining to the ministers. Sorry, not just ministers, but MPs and MLAs. In case of MLAs, it is governor. In case of MPs, it is president. Right? So president will take this decision. However, president while deciding this matter will act according to the advice given by the election commission. This basically is a sort of a judicial, you can say, power of the president. प्रेसिडेंट का पावर हो गया, जुडिशियल पावर. अब प्रेसिडेंट का डिस्क्रिप्शन नहीं है, कोई डिस्क्रिप्शन नहीं. जिस तरह से इलेक्शन कमीशन बोलेगा, जो इलेक्शन कमीशन का एडवाइस होगा, वही प्रेसिडेंट का डिसीजन. प्रेसिडेंट कैन नॉट एक्ट कॉन्ट्ररी टू. तुम्हारा कळलं? आप जब जहां पे लक्ष्मीकांत में क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन लिखे हुए हैं, स्टैट्यूटरी डिस्क्वालिफिकेशन जहां पे लिखे हुए हैं, उसके बाद लास्ट पॉइंट में आपको ये दिखेगा, ये लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट इलेक्शन कमीशन विल गिव एन एडवाइस. Right? वहां भी ये लिखा हुआ whether the president should act according to it or can act contrary. Can president exercise his discretion in this matter? No, president cannot. And the simple and direct reason is here an agency, a third party agency, a constitutional agency, sits in the capacity of a court and follows the principles of national justice and decides. Right? And so president cannot take a different view to the view that or view contrary to the election commission. जो बोला गया election commission ने जैसे बोला president बोला. So practically this this judicial power is exercised by executive called as election commission and not president. समझी बात मुझे आपको? ये जो जुडिशियल पावर है, प्रेसिडेंट नहीं यूज कर, इलेक्शन कमीशन. और इलेक्शन कमीशन एक स्पेसिफिक स्पेशलिस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल एजेंसी है जिसके पास एग्जीक्यूटिव पावर्स, वो एग्जीक्यूटिव के डोमेन में आता है. एग्जीक्यूट करता है इलेक्शन, वही इलेक्शन कमीशन कर. तो वो कॉन्टेक्स्ट में आप देखोगे जुडिशियल पावर एक्सरसाइज बाय एग्जीक्यूटिव. समझी बात एवरीवन? यस, नाउ यू कैन रीड द लास्ट पैराग्राफ. बेसिकली अंडरलाइनिंग फैक्ट ये है कि वाटर टाइट कंपार्टमेंट नहीं है हमारा, फ्लेक्सिबिलिटी है. बस किस तरह की फ्लेक्सिबिलिटी है तो मैं बोलूंगा आपको कि ये सिचुएशनल है. इसके लिए कोई रूल नहीं हम लोग देख सकते, इतना होगा फ्लेक्सिबल उतना नहीं होगा. वो रिजिडिटी आप ना ही पकड़ो तो बेटर. देखो मैं एक बात बताऊं आपको, मैं पहले भी बता चुका हूं. इस तरह से बताना मैं बता रहा हूं आपको, कॉन्क्रीट बताना किसी भी टीचर के लिए बहुत आसान है. जैसे ये पूरा स्टोरी हमारा खत्म होता है चेक्स एंड बैलेंस के आइडिया, आप सबको मालूम है चेक्स एंड बैलेंस. कॉन्क्रीट बताना, अगर मैं कॉन्क्रीट बताऊं आपको ये देखो ये तो योर ब्रेन्स आर एक्सटेंडेड टू इट एंड दे आर सैटिस्फाइड. बात समझी? जैसे प्रेसिडेंट रबर स्टैम्प, यू ऑलरेडी हैव दैट एक्सपीरियंस इन योर ब्रेन. इफ आई से आई एम एंडोर्सिंग, ओके सैटिस्फाइड, वाह क्या बात, समझ में आया सब आपको. मैं नहीं बोल रहा हूं, वहां पे दिक्कत है. बात समझिए आपको? आप में से शायद कुछ लोग हो सकते हैं उनको समझने में और रेजोनेट करने में डिफिकल्टी होती रहे, वो डिफिकल्टी को मेंटेन रखिए. और मैं ये आपको कॉन्स्टिट्यूशन नहीं समझा रहा हूं, मैं एग्जाम पर्सपेक्टिव से ही बोल रहा हूं, वो डिफिकल्टी को मेंटेन रखिए. Don't be satisfied with whatever has been taught. Satisfied नहीं हो. Don't lose motivation. लेकिन satisfied नहीं रहना. Satisfied रहोगे ना? नहीं सर मुझे समझ में आया, वो जो प्रेसिडेंट है वो उनका डिस्कशन नहीं होता, वो काउंसिल मिनिस्टर का डिस्कशन वो. तो इसमें नई बात क्या समझे आप? आपको नया कुछ नहीं समझे. गवर्नर के पास डिस्क्रिशनरी पावर क्या नया समझा? समझिए मैं अगर ये बताऊं गवर्नर के पास डिस्क्रिशनरी पावर, आई थॉट यू मैटर. डोंट गेट सेटिस्फाइड. सोचो, आप लोग जितना सोचोगे उतना एग्जाम के क्लोज जाओ. ठीक करो था. तो क्या करते हैं हम लोग इस पार्ट के ऊपर? अभी डिस्क्रिशनरी पावर्स का पार्ट बचा हुआ. इस पार्ट के ऊपर जो क्वेश्चंस पूछे गए ना इससे पहले, चाहो तो गवर्नर के क्वेश्चंस आप नेक्स्ट लेक्चर के लिए लेके हम लोग बात करेंगे. इन ब्रीफ आई लेट यू नो द स्ट्रक्चर फॉर दैट क्वेश्चन, बट देन नेक्स्ट लेक्चर इज डिस्क्रिशनरी पावर. और मुझे लगता है कि हमारा डिस्क्रिशनरी पावर का ये पार्ट खत्म हो जाएगा एंड वी विल यस ये खत्म हो जाएगा. नेक्स्ट we will start with we will start next lecture with judiciary. Yeah? Thank you.